Hello to everybody. Of course, generally what happens is if we have physical mode webinars, even before the webinar starts, we meet each other, talk to each other, exchange notes. And somehow on online webinars, it seems a bit awkward to do that because we cannot talk to each other individually. So when a single person talks, it is addressed to everybody, so that may look a little bit awkward. We may not talk to each other. So true, so true. हुआ सर का सॉर्ट आउट हुआ? हाँ सर, यहाँ सर आपका इज दिस नहीं सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हुआ सर का? सर कर रहे हैं स्केच पेन ब्लैक कलर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, सर हाँ हाँ। हमें पता चलेगा कि कितने लोग यूट्यूब पे हैं? रमेश बाबू जी, इस सेकंड सेशन के लिए कितने लोग यूट्यूब पे हैं, पता चलेगा? प्ले करने वाला हूँ, लेकिन वो देखने से अच्छा है कि ये समझ में आ जाता है। हुआ सर का? उनका आया यूट्यूब का? अरे उनका कुछ आया व्हाट्सएप? कितना व्यूज हमारे सेशन का कि पहले का? अभी का? चलिए कितना? चलिए हुआ? नहीं उसके जस्ट ऊपर उनको लिंक पता है ना? says 4.8K views. Right. इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिए ना, हाँ, और स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप पे भी डाल दीजिए तो एटलीस्ट हाँ थोड़ा सा मैसेज जाएगा। हाँ, इसमें सेशन 4 की लिंक होगी सर। हाँ हाँ, वो खोल लीजिए आप। यस यस सर, सेम। हुआ? मैं बात करूँगा। हाँ, वेबएक्स पे सर। इनका ऑफिस है कि कौन? नहीं सर, ये वेबएक्स लिंक है। मैं बात करूँगा। इनका ऑफिस है? सर से बात कर। यस, सेम सर। I'm talking to sir. हो गया भेज दिया है। हाँ And got it sir?
यस आ गया। थैंक यू सो आ मच। गया? डन डन। चलो गुड, अब आप लोग बैठ जाए। थैंक्स, वी आर ऑन टाइम। सही बात है। ये नीचे है ना, दिख रहा है नीचे आर में, देखिए ये है। हाँ हाँ बस आ गया ना। हाँ 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 आ गया। yes, हाँ Yeah. so begin। हाँ so namaskar and a very warm welcome to all my esteemed panelists, and also to the huge number of stakeholders, especially youth, who are watching us live from across the length and breadth of the country. This webinar is on implementation of budget 2023 for skill and education sector, and this is a breakout session number 4, which would be focusing the deliberation on promoting apprenticeship as school to work transition. आज हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुबह के उद्बोधन में सुना था, और जिस तरह से इस बार के बजट ने युवाओं पे फोकस किया है, उसके लिए शिक्षा और कौशल दो सबसे ज्यादा आवश्यक वस्तुएं हैं। आज हमारे पैनल पे बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी हमारे चेयरपर्सन सर का, प्रोफेसर एम जगदेश कुमार, चेयरमैन यूजीसी, श्री राजेश अग्रवाल सर, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री राहुल भारती, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरमैन, जापान इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मारुति सुजुकी लिमिटेड, श्री एनजेटी श्रीनिवास, चेयरपर्सन IFSCA, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात, डॉक्टर विकास चंद्र, हेड CSR, आर्सिलर मित्तल निप्पन स्टील लिमिटेड, श्रीमती मनीषा वर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और श्री आशुतोष गुप्ता, कंट्री मैनेजर लिंक्डइन। तो इस वेबिनार की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक छोटी मूवी बनाई है, जिससे कि स्किलिंग और अप्रेंटिसशिप के इकोसिस्टम का हमको संजान आ जाएगा। कैन वी हैव द मूवी प्लीज? अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण। अमृत काल में आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाना मात्र एक स्वप्न नहीं है, ये वो दृढ़ संकल्प है जिसकी ओर पूर्ण दूरदर्शिता और सही रणनीतियों के साथ बढ़ा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में 2023-24 का केंद्रीय बजट इसी नीतिबद्ध योजना की ओर एक बड़ा कदम है। अमृत काल की अमृत पीढ़ी का बजट भारत सरकार की नॉलेज बेस्ड, स्किल्स फोकस्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अर्थव्यवस्था के द्वारा देश की तेजी से बढ़ती कामकाजी जनसंख्या को और सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 5G, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन जैसी न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की बढ़ती मांग के इस दौर में
हमारे युवाओं के सामर्थ्य को समर्थ बनाने और दुनिया के लिए एक बड़े कुशल कार्यबल का निर्माण भारत में ही करने के लिए बजट 2023-24 युवा शक्ति की अमृत पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के अगले चरण में आने वाले 3 वर्षों में अमृत पीढ़ी के कौशल के रीस्किल एंड अपस्किल पर ध्यान देते हुए प्रशिक्षण से लेकर उद्योग साझेदारी व नौकरी के दौरान प्रशिक्षण की कौशल जरूरतों को पूरा करेगी। सीमांत समूहों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कृषि और अनौपचारिक क्षेत्र पर जोर देने के अलावा PMKVY AI, रोबोटिक्स, IoT, ड्रोन, मैक्ट्रॉनिक्स आदि सहित उद्योग के लिए नए युग के पाठ्यक्रमों को भी कवर करेगी। भारत की G20 अध्यक्षता विश्व में तेजी से बढ़ते भारत के प्रभाव का प्रतीक बनी है। आज भारत की आर्थिक विकास दर दुनिया में सबसे अधिक है और वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलते मापदंडों ने भी भारत को एक निर्णायक भूमिका प्रदान की है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा 16 देशों के कामगारों की मांग पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार आने वाले 5 वर्षों में विभिन्न देशों में 37 लाख कुशल भारतीय कामगारों की वैश्विक मांग होगी। इसी के चलते देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर SIIC स्थापित किए जाएंगे ताकि आकांक्षी भारतीयों को डिमांड ड्रिवन वैश्विक अवसरों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में ये केंद्र उम्मीदवारों का मार्गदर्शन, शिक्षा, प्रशिक्षण, आकलन और प्रमाणीकरण करेंगे। बजट 2023-24 की महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक है स्किल इंडिया डिजिटल, एक सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म जिसका उद्देश्य एक कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता का इकोसिस्टम बनाना है, जिसमें डिजिटली वेरीफाइड क्रेडेंशियल्स के द्वारा हर नियोक्ता की होगी अपनी कौशल पहचान। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप को कौशल विकास के एक पसंदीदा मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए बजट 2023-24 में एक पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 47 लाख युवाओं के लिए स्टाइपेंड देने की भी घोषणा की गई है। आज देश एक बार फिर स्किल को सम्मान दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर भी उतना ही जोर दे रहा है। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हों। राष्ट्रीय और वैश्विक मांग के लिए अपने कार्यबल को कुशल बनाने के लिए और भारत को ग्लोबल स्किल कैपिटल बनाने के प्रयास में केंद्रीय बजट 2023-24 एक सार्थक प्रयास है। भारत के अमृत काल की अमृत पीढ़ी के उज्जवल भविष्य को संवारने का और भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का। Welcome back. Now I will just be running few pointers so that those can become the area of deliberation and beyond also. Next. This is the esteemed panel. So once the honorable panelists come, I will introduce them individually. Next. The focus of the budget announcement, the vision of the Amrit Kal is Jan Bhagidari through Sabka Saath, Sabka Prayas. The Saptarishi, which is the 7th priority, and as may be appreciated, youth power is the priority, and all the other aspects also are covering the youth power. And the announcement which is made in the budget is to provide stipend support to 47 lakh youth in 3 years and direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Next. The achievements which have been undertaken in the scheme is on the slide. It has really initiated and throttled the number of apprentices since the scheme was launched in 2016. Also, inclusive indication has come up in a big way, especially for women and the marginalized section. Their participation is
quite in number now, and onboarding of scheme industries in the ecosystem. And it was also because of the fact that lot of optional trades were introduced by the industries themselves. Next. So we have just tried to indicate certain discussion areas, and the esteemed panelist can also add on the inputs which they can offer from the industry's perspective, which from the state perspective, and from the academia perspective. So we have tried to indicate sabka saath sabka prayas, and offering flexibility and ease of doing business to increase greater participation of state and industries to engage the apprentices, the DBT as a game changer in the ecosystem, and India at 100, and especially focusing on the economic empowerment of women, traditional artisans, tourism, and green growth. So now I would take this opportunity of heartily welcoming भारत के अमृत काल में अमृत पीढ़ी का ये जो बजट बना है, उसके सम्मानीय चेयरपर्सन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी का मैं सभी के द्वारा स्वागत करती हूं. Sir is an academician, administrator, and author, and chairman of UGC since February 22. Sir did his master's and PhD in electrical engineering from Indian Institute of Technology, Madras, followed by postdoctoral research at University of Waterloo, Canada. His works in the area of nanoscience and nanotechnology is well recognized. I welcome you, sir, and we would like to have your inputs. Sir. Thank you, Sonalji. Let me also welcome all the panelists and the viewers who are watching this live from across India. Taking a lead from what the Honorable Prime Minister has said, we have set certain goals for ourselves during this Amrit Kal to build an empowered and inclusive India. And these goals can be achieved only when all of us work collectively. Especially the focus is on youth. You might have noticed that when we began our G20 presidency on 1st December 2022, we began with a University Connect program. That is the first program that we had where we contacted thousands of students from across the country and hundreds of universities. And that shows the importance our country gives to our youth. Now, one of the goals that we have set for ourselves, and which is the main theme of our discussion for this panel, is providing apprenticeship support to 47 lakh youth as part of the National Apprenticeship Promotion Scheme. And this is a big goal for ourselves. Since many of the participants in this program who are watching this program are youngsters, let me provide you a brief background on why this goal that we have set for ourselves is very, very important. You know, India is expected to become the most populous country maybe by next year or so. And the labor force in India is a little over 520 million. And more than half of it is in the non-farm sector. And therefore, they come under the Ministry of Skill Development and the Entrepreneurship. Indian labor force is also the second largest in the world. But however, as the Indian economy is growing, today we are the 5th largest and soon we will become 3rd largest. It is possible that a large portion of this labor force will migrate from agriculture to secondary and tertiary sectors. When such a large migration happens,
there is bound to be a large skill gap. And another challenge that we face is that the large number of students who are enrolled in schools, colleges, and universities. Today, we have close to about 300 million students from class 1 to PhD level, and about 41 million students in the higher educational institutions. While there are huge numbers in the general education in the schools, colleges, and the universities, we have fewer number of students who are enrolling in ITI and ITC, Industrial Training Institutes and Industrial Training Centers. This is around 1 million of that order. But if so many, where are these students going if we have only 41 million students in the higher education, whereas in the school level, we have several hundreds of million students? Obviously, many of them are dropping out of the school, or even after they complete the school, they do not have the required skills to find employment for them. So this is where I think we need to do a great deal in providing skills to our students so that our youth will become job ready. Apprenticeship, of course, is a traditionally it is used to provide skills to the youth. Here training is provided by an employer by engaging a person as an apprentice, and then they are provided systematic training in a designated trade for a given period. To make the apprenticeship popular, we have been making consistent efforts to make it more accessible to the youth and to make it more popular. We, of course, brought the Apprenticeship Act in 1961. The major objectives of this act was to regulate the apprenticeship training so that it conforms with the prescribed syllabus and duration and other requirements as laid down by the respective councils, and also to fully utilize the facilities that are available in the industry to impart the training to the youth. There have been several modifications to the Apprenticeship Act to take into the concerns of the employers, industry, students, and different state governments. But in spite of these amendments, in spite of our several efforts, we still need to cover a lot of ground to see that employer participation increases and the school leaving students are trained suitably to find employment. And what are the strategies that we need to work out in order to make apprenticeship as popular, as inclusive as possible? And today we have very eminent panelists here to discuss and provide some insights on what kind of strategies we can develop to empower our youth. So I would like to put a couple of issues on which we can deliberate. For example, how to link our secondary education, particularly the vocational and technical education, to the needs, to meet the needs of the labor market. This is something that we need to deliberate, and how to improve the access and equity by targeting out of the school children. We need to have a targeted approach for this, and how to expand the number of apprenticeship programs. And then we also need to provide pre-vocational training to the students in the secondary education itself, while they are in the school itself. Can we integrate this in the school education? And then how to bring convergence among various vocational programs that are being conducted by various ministries, industries, private institutions, and vocational educational institutes. We all need to sit across the table and bring more convergence. And more importantly, we also need to look at training the trainers. If we want to provide good quality skill education and apprenticeship to our students. And UGC, of course, is working on how to integrate skill education as part of the regular
academic programs with the help of industry. So what more can be done here to make skill education as part of the education in the colleges and the schools? How to make apprenticeship a vehicle of social inclusion, especially from the students who come from the socially and economically disadvantaged groups. We need to develop a strategic plan to increase employer participation in these apprenticeship programs by making apprenticeship more attractive to the employers. We all know that employers would benefit collectively if there is increased workforce training, but the individual employers may not show as much enthusiasm. So this acts as a barrier. And how to minimize this barrier? This is something for us to discuss. And lastly, how to remove this perception of apprenticeship as a low status option for school dropouts. We need to involve social scientists here, psychologists, even philosophers to make sure that our perception changes, that every work, every job that we do is important and that needs to be given respect in society, and how to provide seamless migration of students from tertiary education to skill education and vocational education and back and forth. You might have recently seen the announcement of the National Credit Framework, which acts as a foundation on which we have three verticals. The first vertical is the National School Framework, and the second vertical is the National Higher Education Framework, and the third one is the National Vocational Education Framework. And we have also designed this credit framework in such a way that the students can seamlessly migrate from one level to the other level. 0 to 4 levels are defined for school education, and 4.5 to 8 are defined for higher education and skill and vocational education. Based on their learning outcomes, the students can easily migrate back and forth between general education, skill education, and vocational education. And we are also integrating internships and apprenticeships as part of the general education as mandatory part of their education. So there is a great deal of things that we need to do. Of course, we have the conventional skills such as welding, plumbing, and so many other conventional skills. But we also have emerging technical skills such as the web design, data analytics, even medical equipment operation and their maintenance, fintech, drone technology, and so many. As the Honorable Prime Minister has said, we are now working on establishing a national digital university, and many emerging skill-related programs will be made available in this national digital university. And our goal is to reach out to crores of our students who are in the remote parts and the rural areas of our country, to enable them with skills so that they become employable and they become vehicles of social and economic change. And as part of the scheme that we have launched, there are many innovations that are being introduced. For example, one is the DBT scheme that we are introducing to ensure that the students financially benefit without any hindrances. And there are several other things that we are doing to bring more employer participation and to make these programs more attractive. So with this background information, I now throw open the panel discussion, and each panelist may take about 7 to 8 minutes and give their suggestions and ideas on how we can make this apprenticeship program a popular and attractive scheme for the youth of India. Thank you so much, sir. Your very visionary and very in-depth analysis
of how to make apprenticeship both a win-win method, win-win solution for the industries and the students and the academia. I think this will go a long way in setting the tone for the discussions further. So thank you, sir. Thank you once again. I would now to invite Rajesh Agarwal, sir, Additional Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Shri Rajesh Agarwal is an Indian Administrative Service Officer of 1994 batch, Manipur cadre, and has immense exposure and contributed in a big way as Joint Secretary in the Skills in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for nearly 5 years. He has also served in the roles of Executive Director, Indian Trade Promotion Organization, and also as the Chief Electoral Officer for Manipur with the Election Commission of India. I welcome you, sir, and your expertise in the area of skills. We all are very eagerly looking forward to have your input, sir. Thank you very much, Sonal. Thank you, Chairman. Good afternoon, all the panelists. Good afternoon, all the listeners. First of all, as truly pointed out, this is the era of India. This is the Amrit Kal, which every country looks forward to. अगले 25 साल हमारे देश में भी, I think युवा population जो रहेगी, we are the country, world's only country which will have maximum people in working age population for next 25 years. And this is our opportunity. ये हमारे 25 साल हैं जिसपे अगर हम लोग सब साथ मिलकर काम करें तो देश जो हमारे प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है, जो एक विजन उन्होंने हम लोग के सामने रखा है, हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात है अप्रेंटिसशिप की। जब हम लोग बात करते हैं तो अप्रेंटिसशिप ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे देश में नया है। मेरा मानना है हम लोग तो प्राचीन काल से ही अप्रेंटिसशिप को एक हमारी जो गुरुकुल की व्यवस्था थी उसमें आप अगर देखेंगे शिक्षा और कौशल साथ ही चलता था। तो एक व्यवस्था में साथ ही चलता था। उसके बाद हमारे जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल सिस्टम आए उसमें भी आप देखेंगे कि अप्रेंटिसशिप वाज इनहेरेंट इन पार्ट ऑफ एनी फैमिली। Everybody was getting apprenticeship in a family, and that's why occupations were also hereditary in our society. Slowly, with advent of more technology, more industrialization, when ये सारी ऑक्यूपेशन के ऑप्शंस लोगों के लाइफ में बढ़ने लगे, आकांक्षाएं भी बढ़ने लगी, हम लोग नए नए ऑक्यूपेशंस की तरफ भी देखने लगे, तो इनफॉर्मल अप्रेंटिसशिप का भी सिस्टम हमारे देश में बड़ा सुदृढ़ है, जहाँ की बहुत सारे एजुकेशन और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अब इनफॉर्मल सिस्टम से ही होके आता है। उसको हम लोग पहचाने, उसको हम लोग सर्टिफाई करें, उसको हम लोग करें न माने, बट ये सिस्टम बड़ी तेजी से चलता आ रहा है। तभी हम लोग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अप्रेंटिसशिप 1961 के बाद भी बहुत ज्यादा हमारे देश में नहीं बढ़ा, फिर भी वी हैव बीन एबल टू have a good manufacturing base, good service base in the industry, and today manufacturing and service contribute more than 75% of the GDP. इसलिए काफी ये informal apprentice, but अब ये समय आ गया है क्योंकि slowly we are moving in a direction where the world is looking at a more formalized workforce. World is talking of more labor rights, working conditions, और ऐसे सिस्टम में अगर एक ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ हम लोग को बढ़ना और अपना काम जो whatever role India is destined to play at the global scale, I think हम लोग को अपने वर्क प्लेस को भी फॉर्मलाइज करना होगा, और वर्क प्लेस को जब फॉर्मलाइज कर रहे हैं धीरे धीरे तो अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम को भी फॉर्मलाइज करना होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा रोल आता है हाउ डू वी इंश्योर academia and industry linkage that our honorable prime minister has been talking about, which he alluded to today also. इस लिंकेज को कैसे हम लोग और स्ट्रॉन्ग करें ताकि जो हमारे युवा हैं उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले, उनको सही कौशल मिले, ताकि वो अपना रोल जो ग्लोबल स्केल पर, नेशनल स्केल पे अपना रोल अदा कर सके। तो फॉर्मलाइज करने के लिए अप्रेंटिसशिप को अगर बढ़ावा देना है तो दिस एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज विल हैव टू गो अ लॉन्ग वे। देन इंडस्ट्री विल आल्सो नीड टू टेक अप्रेंटिसशिप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अपना कमिटमेंट के रूप में आगे लेके चलना पड़ेगा कि इंडस्ट्री को भी ये मानना पड़ेगा कि अप्रेंटिसशिप एक ऐसा माध्यम है जो कि सिर्फ
युवाओं को कौशल देने का माध्यम नहीं है, परंतु इंडस्ट्री को अपनी वर्कफोर्स, जो कि सही वर्कफोर्स है, जिसमें कि स्किल प्रोडक्टिविटी हाई हो, वैसी वर्कफोर्स तैयार करने का एक अच्छा मौका है। वर्ल्ड ओवर अगर हम लोग देखेंगे, जो बड़े टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशंस हैं, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सभी का जो टेक्नोलॉजी, जो वर्कफोर्स बेस है, वो अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम से ही उभर के आता है। The best of countries also do have a very strong apprenticeship ecosystem. इवन सर्विस सेक्टर में देखेंगे, इकोनॉमीज लाइक यूके, जहां की सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, वहां भी जो वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर को फीड करता है, वो अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम से बढ़ के आता है। और इंडस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर। इसलिए अब ये जरूरत है कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्री यूथ इसमें काफी अग्रणी भूमिका निभाए। और जो अप्रेंटिसशिप के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रावधान, मतलब 1961 का जो एक्ट था, उसको 2014 में पूरी तरह से सरल कर दिया गया, उसको काफी मेजर रिफॉर्म्स किए गए और जो भी इंडस्ट्री की आस थी उसको माना गया। 2019 में जाके रूल्स में भी ऐसे चेंज किए गए ताकि जितना भी सरल बनाया जा सके, इस अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम को बनाया गया। आज के दिन जो अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम है, उसमें अब पूरी तरह टेक्नोलॉजी का यूज, जो नई योजना ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो बजट में अनाउंस हुई है, विद 47 लाख बच्चों के लिए स्टाइपेंड की इसमें व्यवस्था की गई है। इसके अगर स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, पूरी तरह एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे अप्रेंटिसशिप को लाया गया है ताकि इंडस्ट्री का इंटरफेस बच्चों से या सरकार से सीमलेस रहे। इसमें कोई डीप रेगुलेशन नहीं हो, सॉफ्ट टच रेगुलेशन हो। जो शिकायत इंडस्ट्री की रहती थी कि इट्स क्वाइट रेगुलेटरी इन सिस्टम, उसको काफी सरल किया गया है, सॉफ्ट टच रेगुलेशन रहे। सारा काम जो अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। बच्चे का ऑनबोर्डिंग भी ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है। आपको पूरी तरह अपने कोर्स को डिजाइन करने का, जबकि 200 से ज्यादा कोर्स डिजिग्नेटेड ट्रेड में, 400 से ज्यादा कोर्सेज ऑप्शनल ट्रेड्स में ऑलरेडी हैं इकोसिस्टम में, फिर भी क्योंकि हम लोग जब अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग करते हैं, कौशल देते हैं किसी को, तो कल के लिए नहीं देते हैं, फ्यूचर के लिए देते हैं। कौशल ट्रेनिंग, स्किलिंग इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए जब स्किलिंग कर रहे हैं तो इंडस्ट्री कैन डिजाइन ऑन न्यू कोर्सेज जो कि फ्यूचर के की तरफ देखते हो, कौशल ऐसे स्किल्स जो कि हमें लगे जिसकी उपयोगिता फ्यूचर में और बढ़ेगी, उस तरह के कोर्सेज को आप डिजाइन कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी भी इस नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में दी गई है ताकि आप इंडस्ट्री इसमें अग्रणी भूमिका निभाए, सरकार से इंटरफेस मिनिमम हो, बच्चों को ऑनबोर्ड करे, नए कोर्सेज उसके लिए डिजाइन करे, उनकी ट्रेनिंग करे, और इच्छा हो तो उस पर असेसमेंट और सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था की गई है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशन तक भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ अभी चेयरमैन महोदय ने बताया, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। उसमें एक वोकेशनल का भी पिलर है जिसमें भी क्रेडिट मोबिलिटी की भी व्यवस्था की जा रही है। मेरा अनुमान है और मैं मानता हूं कि भविष्य में अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम भी अगर स्टेबलाइज करेगा और इसमें भी असेसमेंट सर्टिफिकेशन अच्छा होगा, तो इसमें भी जो बच्चे ट्रेंड होंगे, सर्टिफाई होंगे, उसमें भी वो क्रेडिट्स को एक्वायर कर सकेंगे, उसको एक्यूमुलेट कर सकेंगे और उन क्रेडिट्स के बलबूते कल कोई नई डिग्री प्रोग्राम और डिग्री को भी हासिल कर सकेंगे। तो ये सारे रिफॉर्म्स और व्यवस्था, आई थिंक लैंड हैज बीन paved by the government and I think government has provided the pave, now industry needs to walk और युवाओं को इसका उपयोग करना चाहिए। ये जो 47 लाख बच्चों के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं सरकार की ओर से एक दिशा है, ये कैटलिस्ट है, एक दिशा दी गई है, पर यह नहीं है कि 47 लाख बच्चों को ही 3 साल में अप्रेंटिसशिप से जोड़ना है। हमारी इंडस्ट्री का पोटेंशियल उससे भी बहुत ज्यादा है। हम 1 करोड़ बच्चों से भी ज्यादा अप्रेंटिस जोड़ सकते हैं। इंडस्ट्री को जरूरत नहीं है स्टाइपेंड सपोर्ट भारत सरकार से लेनी, बहुत सारी इंडस्ट्री खुद में ये करती आई है। मारुति सुजुकी के महोदय सामने बैठे पैनल पे, वो बताएंगे। आई थिंक मारुति सुजुकी में बहुत ही अच्छा अप्रेंटिसशिप का इकोसिस्टम है जिसमें सालों से वो स्टाइपेंड देते चले आए हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री अच्छा कार्य इसमें कर रही है, उसी कार्य को और आगे बढ़ाना है। और एज ए इंडस्ट्री हमारी क्षमता साल में 15 लाख नहीं 50 लाख अप्रेंटिस को भी हायर करने की है, क्योंकि 15% तक अपने वर्कफोर्स हम अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम से रख सकते हैं। अगर हम लोग उसको पूरी तरह लीवरेज करें और आगे बढ़ाएं तो हमें लगता है कि वी विल बी एबल टू गो ऑन द विजन लेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इस अमृत काल में अपनी अमृत पीढ़ी को हम लोग सही तरीके से तैयार करेंगे। और युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि
चेयरमैन महोदय ने बताया, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। एनी स्किल विच यू एक्वायर इज यूजफुल, एंड स्किल को हमेशा आपको अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नई नई स्किल्स को एक्वायर करेंगे, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और धीरे धीरे, क्योंकि मैं अब वाणिज्य का भी पार्ट हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर, वर्ल्ड ओवर भी ट्रेड में जो हम लोग देख रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड में भी सर्विसेज की मात्रा अब धीरे धीरे बढ़ रही है। सर्विसेज में ट्रेड बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी ने अब ये पॉसिबल कर दिया है कि क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ सर्विसेज, इंडिया में बैठ के भी आप स्किल को प्रोवाइड कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में या यूरोप में। आपको कोई आईटी स्किल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप काम कर रहे हैं, आप उसको यहाँ बैठ के भी प्रोवाइड कर सकते हैं और देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं। तो आज के दिन सर्विसेज का एक्सपोर्ट में शेयर भी बढ़ रहा है, और अब टेक्नोलॉजी ये इनेबल करती है कि कोई भी स्किल जिसमें कि एक डिजिटल एलिमेंट है, क्योंकि डिजिटल एलिमेंट आज के दिन हर स्किल में चला आ रहा है, तो डिजिटल एलिमेंट उसको हम लोग अपने घर बैठकर भी, अपने देश में बैठकर भी, विदेश में, पूरे ग्लोबल स्केल पे हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इंडिया के लिए आई थिंक दिस इज आवर स्ट्रेंथ। युवा हमारे स्ट्रेंथ है, और इन युवाओं को सही कौशल से जोड़ने की जिम्मेवारी आई थिंक हम लोग सबके ऊपर है, खासकर इंडस्ट्री के ऊपर है और एकेडमिया के ऊपर है, कि जो भी युवा वो स्किल को एक्वायर करे, उसको किस तरह से हम लोग कोर्सेज के रूप में सर्टिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें, उनको क्रेडिट एक्यूमुलेट करके आगे बढ़ने का मार्ग उसके लिए प्रशस्त करें। तो धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much, Rajesh Agarwal sir. In fact, your deep insight, because I may take this opportunity कि जब ये स्कीम ड्राफ्ट हो रही थी, तो सर का सबसे बड़ा योगदान, सर का इस स्कीम को ड्राफ्टिंग में और इस स्कीम को रोल आउट करने में सर का रहा है। इसीलिए सर ने बड़ी डीप इंसाइट हमें दी है। खास तौर पे सर ने जो ये बात कही है कि इंडस्ट्री एज अ स्टेक होल्डर से ही कंसल्टेटिव प्रोसेसेस कई बार किए गए, और उनके पास से ही सुझाव मंगा के एक इस एक्ट को, रेगुलेटरी एक्ट की जगह सरकार कैसे फैसिलिटेटर बन सकती है, उसकी तरह से एक भूमिका करी गई। और सरकार ने अब एक रास्ता बना दिया है, और अब हम आह्वान करते हैं इंडस्ट्री से कि इंडस्ट्री कैसे अपने इस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाएं, और किस तरह से अपने कमिटमेंट को साकार करें, जिससे कि यूथ का जो एस्पिरेशन है अप्रेंटिस बनने का, जॉब मार्केट के लिए रेडी होने का, उसको कैसे साकार करें। सो थैंक यू वंस अगेन राजेश सर, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी, जिससे जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हैं उनको भी इससे जरूर बहुत फायदा हुआ होगा। अब मैं वेलकम करना चाहूंगी श्री राहुल भारती जी का। नमस्कार श्री राहुल भारती जी। श्री राहुल भारती is the Executive Director, Corporate Planning and Government Affairs at Maruti Suzuki India Limited. He is also the Chief Investor Relations Officer at Maruti Suzuki. He is serving as the Chairman, International Relations and Trade Policy and Chief Engagement Officer of the Society of Indian Automobile Manufacturers, and also the Chairman for Japan India Institutes of Manufacturing, with their presence at Gurgaon, Gandhinagar and Mehsana. So welcome once again, Shri Bharti, and let us have the industry input directly from you. Thanks, Ms. Sonal Mishra ji, and thanks such an esteemed panel, Professor Jagdesh, Mr. Rajesh Agarwal, former Secretary Shri Njeti Srinivasi, and all the esteemed panel from Maharashtra and ArcelorMittal. First of all, I have to mention that I'm very enthused that I can see small pop-outs from students all over the country. That's a big advantage of having a, connecting the students also to this. So it's not a government industry interaction alone. So very, very nice. And it's obviously digital that can enable it. I strongly agree with Shri Rajesh Agarwal ji. The manufacturing sector is critical for taking India from a developing economy to a developed economy. And if the manufacturing sector has to grow, we have to be globally competitive in cost and in technology. Cost, technology, and quality. Now, if we have, for example, Maruti Suzuki exports to about 100 countries of the world. We export cars, which are a high-tech item, and cars are going through a lot of technology change. The central
factor which is responsible for delivering quality is skilled workforce. The people who make the car, they have to have very good skills. Now, on the other hand, we have a great country of immense youth power, let's say emerging from rural background or for modest backgrounds in cities, who have a lot of aspirations, but they don't know how to, connect their aspirations with actual employability. So in this phenomena, skilling and training is where apprenticeship comes in, are very critical bridges. So at least for industry, for a company like Maruti Suzuki, skilling and training is not just a good factor. It is strategic. It is central and strategic to our business. Therefore, it is a key pillar of our CSR as per the approved board norms as per Ministry of Corporate Affairs. And it is also a central strategic activity in our manufacturing. Therefore, we have, for example, we engage with about more than 50 ITIs in India across 18 states. We are taking ITIs to the next level. We have opened 3 Japan-India Institutes of Manufacturing. And I would welcome this panel to visit our Automotive Center of Excellence in Gandhinagar. It's a world-class center which has real models where students can come and learn visually scaled up models where they can understand with flowcharts, with diagrams, etc. In terms, so we benefit or we kind of contribute to about 10,000 students a year through our CSR and engagement with ITIs. In terms of apprenticeship, we take about 4,400 students a year. And our focus always is, see, we talk about youth. This is actually pre-youth. Many of these students become employable at 18, which is teenage. It's even before youth. So there's a huge gap which needs to be bridged. And while we are talking about skilling, we also have to talk about soft skills like safety, for example. Industrial safety is very paramount for a student of this age, 17, 18. Then we have basic English, digital literacy, discipline, health and hygiene, industry practices like a uniform, like biometric attendance, and we have some Japanese practices like a morning exercise, like quality circle meetings where employees have to come together and use, because they are the best position to make innovation in the manufacturing processes. So how to suggest changes in the manufacturing processes through quality circle meetings, etc. So the institutes of manufacturing that we have brought about are an exact replica of what we have, in the actual industry, like a mini vehicle assembly line, like an industrial grade paint booth, a CNC machine, use of technology, simulators, etc. We need to provide these advanced tools to these students to be, to make them really up to date with what industry needs. And here I would like to take a pause and say, it is industry who's the customer of skilling. So it's only industry which can tell what skills it needs. For example, about 10 years ago, our ITIs were teaching carburetors while the car industry had totally 100% switched over to computerized fuel injection systems. So the ITIs were almost 10 years behind. Now things have changed drastically. And thanks to the new legislation and regulatory changes that we have, the DBT, for example, is an excellent tool. As Sri Agarwalji mentioned, the government should have a limited role in supporting skilling and training financially. I think it is industry's job. Having said that, a digital platform on which we have all a database of all apprentices all over the country is of immense value.
not just for transferring some amount of subsidy, but for making them cross-country employable. Every industry would like to have some kind of diversity and some kind of cross-country migration to benefit from diversity, and this database will be of tremendous help. So I see the side benefits as being even bigger than the central benefit of having a cross-country cross flow of trainees and labor, so that both industry can benefit and there would be some equalization of opportunity all across country. The next point that I would like to mention is that the DBT will also have tremendous benefit because it makes the young boy or girl, I mean, he's a teenager at 17 or 18, both financially literate and bankable. So, if he wants a scholarship in the future, or if he wants to start an entrepreneurship, and in our institutes, by the way, we encourage people to join our companies or even our competitors, but we also encourage them to take up entrepreneurship, and we provide some kind of support also for that. So this kind of financial enabling can help them graduate to entrepreneurship soon early enough in their lives. So opening an account to a young boy or a girl is extremely has a lot of strategic advantages. He starts being financially literate. He starts feeling bankable. He can start he can start, for example, a habit of savings instead of as our parampara says, sara bhog nahi, hum to yog mein vishwas karte hain. So if they start saving for their entrepreneurship opportunities or for their families or for building a house for the family or for their parents' medical needs, it's an excellent thing. The last point that I wanted to mention is element of respect for skill. I think we have to give a lot of respect to an electrician as almost at the same platform to an electrical engineer. Being an engineer myself, let me tell you, during Diwali, I am not able to efficiently join two wires together so that they don't create spark. I'm not able to do that because it's workmanship, which is a critical skill. Similarly, nurses as compared to doctors, I mean, both are extremely valuable elements of the chain in healthcare. So we have to have element of respect for skill so that they can look up to their jobs with pride. So I'll pause here and we'll go along the discussion as it comes. These are my few points of submission. Thank you so much, Rahul Bharti ji. In fact, कौशल का सम्मान, ये जो आपने स्वयं बताया है, एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री को जब आप लीड करते हैं, तो मुझे लगता है ये मैसेज जो हजारों बच्चे आज के दिन हमारे से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, उनके लिए और अन्य इंडस्ट्रीज भी जो पूरे हिंदुस्तान से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और अन्य बातें जो आपने खास तौर पे फोकस की सॉफ्ट स्किल्स के लिए, कि बेसिक डिजिटल एक्सपोजर, बेसिक सेफ्टी एक्सपोजर, ये भी बहुत आवश्यक है। अलाइनमेंट ऑफ ट्रेनिंग विद द जॉब मार्केट रेडीनेस, ये भी आपने उदाहरण की तरह से बताया, खास तौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर के ही उदाहरण से बताया, ये भी बहुत अच्छा मैसेज है। और इंडस्ट्रीज भी, मैं मानती हूँ जो आपने भी सेंटर्स चालू किए हैं और अन्य कई इंडस्ट्रीज ने फ्लेक्सी एमओयू करके, पीपीपी मॉडल पे आईटीआई के साथ पार्टनरशिप करके, इंक्यूबेशन सेंटर से लेके आर&डी सेंटर से लेके कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए हैं। और जो चेयरमैन सर ने शुरू के उद्बोधन में जो बात कही थी कि इंटर्नशिप के लिए भी ऐसे बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहां पे इन लोगों ने इस तरह के सेंटर्स बनाए हैं और बच्चे उनके इंस्टीट्यूट से भी नजदीक की इंडस्ट्रीज में जाके भी ट्रेनिंग लेते हैं। तो आपने, और इसके अलावा जो आपने डीबीटी के लिए बोला कि ये गेम चेंजर है, जो बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही
वो फाइनेंशियली इनेबल्ड बनाएगा और आगे जाके यही बच्चे केवल वेज एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप करने की भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन है। सो थैंक यू वंस अगेन। एंड नाउ लेट मी टेक द ऑनर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग श्री इंजेटी श्रीनिवास सर, चेयरपर्सन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात. He is currently heading this maiden institute, and he has been instrumental in pushing through significant reforms in the corporate and finance sectors. Sir has played a pivotal role in decriminalization of various minor procedural and technical offenses under the Companies Act that led to a significant improvement in India's ranking in the ease of doing business. Thank you, sir, for that. He has been instrumental in pushing through insolvency and bankruptcy code also. We welcome you, sir, and Gift City has been a huge focus in this year's budget as well. So looking into the deep insight coming especially from the financial sectors, आप इन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? धन्यवाद धन्यवाद सोनल जी, Chairperson UGC Shri Jagdish Kumar, my co-panelists and participants, especially the youth. मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। जब सोनल जी ने मेरे से बात किया कि आप भी इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करिए, तो मुझे थोड़ा अचंभा लगा कि गिफ्ट IFSC में एक फाइनेंशियल रेगुलेटर, इस स्किलिंग में मैं क्या बात करूंगा। लेकिन उस पर ध्यान से जब मैंने विचार किया तो ये बहुत ही फार साइटेड एक इनिशिएटिव सोनल का था कि फ्यूचर में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो गिफ्ट सिटी है। अभी इस सेमिनार के दौरान हमें जगदीश कुमार जी ने पॉलिसी पर्सपेक्टिव दिया, अग्रवाल जी ने जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, मैक्रो पर्सपेक्टिव है, उस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, और भारती जी ने इंडस्ट्री के लेवल पे क्या क्या हो सकता है, क्या सिनर्जीज हो सकती है, उसके बारे में बताया। मैं आपको एक इंटरनेशनलाइजेशन जो प्रोसेस चल रही है, भारत की जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस चल रही है, और भारत का जो एस्पिरेशन है कि वो एक दिन सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, उसमें फाइनेंस का क्या रोल होगा, उसमें फाइनेंशियल सेंटर का क्या रोल होगा, और उसमें युवाओं को किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, स्किलिंग, ट्रेनिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उस विषयों पे थोड़ा कुछ कहने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले जब हम देखते हैं ये पूरा जो स्किलिंग का इनिशिएटिव है, जैसे कहा गया है, ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ है कि, और ये एक विन विन सिचुएशन दोनों इंडस्ट्री के लिए भी और युवाओं के लिए भी है। युवाओं को एक स्किलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बाद में वो हासिल कर सकते हैं, और इंडस्ट्री को एक रेडीमेड स्किल्ड वर्कफोर्स मिल सकता है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर जो हम देखेंगे तो जैसे अग्रवाल जी ने कहा था कि दुनिया में सर्विसेज का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ग्रो कर रहा है। इंडिया में सर्विसेज 50% से ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूट करता है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। फाइनेंस एक तरह से देखो, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, गिफ्ट का जो पूरा नाम है वो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। मतलब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का एक मिलाप है। इसको एक साधारण तरीके से अगर कहने की प्रयास करूंगा तो टेक्नोलॉजी एक सर्कुलेशन सिस्टम की तरह है। हमारी जो बॉडी है उसमें पूरी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, उसको आप मानिए वो टेक्नोलॉजी है, और फाइनेंस लाइफ ब्लड है, खून है, और जब खून बॉडी के हर पार्ट में जाएगा तो वो नरिशमेंट होगा। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे, फाइनेंस एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। भारत में भी जो हमारा इंक्लूसिव फाइनेंस की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, या हम
नेट जीरो एमिशन की बात करते हैं, इन सब में फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तभी इन्वेस्टमेंट होगा, तभी जॉब क्रिएशन होगा, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और तभी इंक्लूसिवनेस भी आ पाएगा। तो गिफ्ट एक तरह से देखो तो वो फ्यूचर की तरफ देख रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो 2003 में उन्होंने ये कॉन्सेप्चुलाइज किया। इट वाज अहेड ऑफ टाइम्स। 2003 में भारत में एक फिनटेक का कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं था जैसे आज फिनटेक और डिजिटलाइजेशन एक बहुत ही ऑर्डिनरी एवरीवेयर, इट हैज रीच्ड एवरीवेयर, ये उस टाइम पे नहीं था। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे उसको उन्होंने इमेजिन किया कि वो क्या रोल प्ले कर सकता है। और 2014 में ये फिनटेक जो सिटी है इसका शुरुआत हुआ था। और 2019-2020 में एक यूनिफाइड रेगुलेटर स्थापित किया गया, दैट इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ये अपने में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है कि ये अकेला अथॉरिटी बैंकिंग को, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट्स, फंड्स, पेंशन, सारे जो सेक्टर्स है उसको रेगुलेट करता है। जो डोमेस्टिक रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई हो, सेबी हो, वो यहाँ पर उसका रेमिट नहीं है। यहाँ पर आईएफएससी ही ये सारे रेगुलेशंस को चलाता है और यहाँ की इंडस्ट्री को डेवलप करता है एक इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन की तरह। अब ये सवाल उठता है कि इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन एक देश में कैसे हम कर सकते हैं। अभी अगर आप देखते हो, क्योंकि हमारे कंट्री में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, उसका मतलब रुपी को आप डॉलर में, डॉलर को रुपी में, इस तरह माने रुपी को डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए। इसलिए कई जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और सर्विसेज हम एक्वायर करते थे वो हम बाहर देशों से करते थे, जैसे सिंगापुर हुआ, लंदन हुआ, दुबई हुआ। आज हम चाहते हैं कि वो सारे सर्विसेज जो हम बाहर से हासिल कर रहे हैं वो सारा हम गिफ्ट आईएफएससी से हासिल करें। इतना बड़ा देश जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जब इंटरनेशनलाइज हो रहा है, आप सोचिए कितने सर्विसेज वो एक्वायर करता है। री इंश्योरेंस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, लीजिंग। अभी आपने देखा कि एक इंडस्ट्री ने, एक ग्रुप ने 470 एरोप्लेन का ऑर्डर दिया है, जो विश्व में सबसे बड़ा ऑर्डर आज तक है। अब ये प्लेनें लीज कहाँ से होंगी? आज ये प्लेन लीज होती हैं ज्यादातर आयरलैंड से, डबलिन से। कल को अगर ये गुजरात से गिफ्ट आईएफएससी से लीज होंगी, आप इमेजिन करिए पूरा जो मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन इंडस्ट्री है वो यहाँ आ सकता है हिंदुस्तान में, गिफ्ट में नहीं, पूरे भारत देश में आ सकता है। कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज उससे हो सकती है। तो संक्षेप में मैं ये कह दूंगा कि हम ये सारे चीज़ें अभी बैंकिंग ये सारे देख रहे हैं और बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, लेकिन कई नए चीज़ें जो हो रही हैं यहाँ पर, एक यूनिवर्सिटीज़ का भी जो है एक्सटेंडेड इकोसिस्टम बनाने के लिए इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, इसको भी एनेबल किया गया है, और फिनटेक को। तो इससे क्या होता है, कई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इंडस्ट्री के साथ जुड़ने के लिए, और इनको भी वर्कफोर्स चाहिए। हमारे जो वर्कफोर्स इंटरनेशनलाइज हो सकेगी वो यहाँ से इंटरनेशनलाइज हो सकेगी। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक तरह से हम फाइनेंशियल सर्विसेज का नेट एक्सपोर्टर बन सकते हैं। अभी हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपोर्ट है केवल 5 बिलियन है, ये 10 गुना बढ़ सकता है। तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, और मैं ज़रूर ये देखूंगा कि कैसे ये ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़, ऑन साइट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ की इंटरनेशनल फाइनेंस में हमारे युवा लोग कैसे भाग ले पाएंगे, फिनटेक में, इनोवेशन में, एक्सेलरेटर द्वारा या और जो मेजर्स के द्वारा कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। इस पे हम लोग पूरा चिंता करके, इंडस्ट्री से भी बात करके कुछ योजना बनाएंगे जिससे ये अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए खुल सकता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, और भी पैनलिस्ट हैं। मैं पुनर्बार सोनल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और मुझे ज़रूर ये कॉन्फिडेंस है कि आपने जो ये फिनटेक और डिजिटलाइजेशन
और जो ये सर्विसेज और फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में जो ये बताया, और इसके साथ ही साथ दी न्यू अपॉर्चुनिटी दैट इज अबाउट द aircraft leasing, the shipping leasing, and even the collaboration with the foreign university, I think this will go a long way in creating a huge demand and ultimately raising the aspiration of the youth across India to look forward to whatever is upcoming in the gift city area. So thank you once again, sir. Thanks for the insight. Thank you. I would now take this panel discussion forward. और अभी जैसे हमें सर्विसेज सेक्टर के बारे में पता चला, सर से फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में पता चला, अब फिर से हमारे पास आ रही है एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत काफी काम ट्रेनिंग में और स्किलिंग में किया है। तो अब मैं आमंत्रण करती हूँ डॉक्टर विकास चंद्रा जी का। डॉक्टर विकास चंद्रा हेड CSR है आर्सिलर मित्तल निपन स्टील इंडिया लिमिटेड के। He has substantial work experience in diverse sector ranging from extractive industries, mining and metals and energy to NGO. तो हमें एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव आपकी तरफ से मिलेगा डॉक्टर विकास चंद्रा जी। A PhD holder, he is also a very decorated officer. There are a number of awards which he has received. If I may name a few, the most impactful CSR leaders globally by the World CSR Congress. So he has been decorated by that. So now I heartily welcome Dr. Vikas Chandra ji for his inputs. Thank you, Sonal ji. And Prof and my esteemed co-panel. Namaskar. As our presence, and we are into a manufacturing of that manpower. A skilled manpower is a highly important as we treat. So for congratulate the we are taking skill development and entrepreneurship. जुबेर कहाँ है? जुबेर कहाँ है भाई? बाहर कैसे चले जाते हैं लोग? हाँ, Sonalji, he may not be aware that there is a network problem. Vikas ji, you Am I can switch off your video because no, your voice is cracking in between. You can switch off your video possibly, and then Okay. you can speak, please. Yeah, thank you. We have given you messages also. Please check. You can switch off your video. Yes, now you can speak, please. Yeah. So, so through our CSI initiatives, we are collaborated with all the local ITIs. So, this is as an industry, when we went into all the local ITIs, we found that the code it requires, as Rajiv sir was also saying, that upgradation of the course curriculum, the practical and the lab setups, the outdated equipments, and so we took up as a supporting these local and strengthening these local ITIs by setting up a center for excellence in with modern equipments. So we have set up a center for excellence in around 4 ITIs. We are going in enhancing our collaboration with the ITIs. Besides that, we have also providing them on-job training in our plant facilities. That we are supporting all the ITIs that we have partnered with, because हमने देखा कि जब वो ट्रेनिंग हो जाता है
और जब वो एक्चुअल एक्सपोजर के लिए जाते हैं इंडस्ट्री, जब उनका स्कूल से चाहे ITI पढ़ने के बाद और आपकी आवाज फिर से थोड़ी क्रैक हो रही है विकास जी, आपका। हाँ, बाद हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आप फिर से कहें। ओके, तो अब ठीक है। sorry, maybe because you can rejoin from where यस we rejoin. विकास, तो विकास जी आप अभी हमसे डीलिंक होके आप दोबारा रिजॉइन होइए। तो इसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए हम विकास जी से थोड़ी देर बाद अब थोड़ी देर बाद वार्तालाप करेंगे। विकास जी आप थोड़ी देर बाद अपना वार्तालाप चालू रख सकते हैं। और अब मैं अवकाश लेती हूँ और इनवाइट करती हूँ श्रीमती मनीषा वर्मा मैडम का। Srimati Manisha Verma is an Indian Administrative Service Officer of the 1993 batch Maharashtra cadre, a graduate in public policy, law, governance and development from Harvard Kennedy School, US, and IDS Sussex in UK. She has contributed to drafting of some of the most transformative laws and policies in India, impacting the marginalized communities especially. Madam, we heartily welcome you in today's panel discussion, and we are very excited to hear the state's view, what the states are, how the states are contributing, and how states are in a way complementing and supplementing the initiatives which are undertaken by the Government of India. So let's have the insights for the youth aspiration, for the apprenticeship, for the internship, and basically making the youth job ready from Srimati Manisha Verma Madam. Thank you, Sonal, so much for having me here, and a very good noon to all my esteemed co-panelists from the industry, Honorable Chairperson of this session, Professor Jagdesh Kumarji, UGC Chairperson, my fellow colleagues from the government, Rajesh Agrawal Sirji, Sonal, because of whom I'm speaking to all of you, and all the fraternity and friends from the skilling ecosystem who have joined online today. So I would just like to show where we stand in Maharashtra, building on the inputs that have been given by the esteemed panelists, giving a overall macro picture. So I will now take you drill down to the operational details of what the state governments are doing and putting it in the context of NAPS as well as deepening of industrial ties for better apprenticeship, not only better apprenticeship, but to leverage the demographic dividend that we keep talking about. Maharashtra has a huge demographic dividend. हमारी करीब 50% पॉपुलेशन जो है लोक संख्या वो युवा वर्ग है। मैं दोनों भाषाओं में बोलूंगी क्योंकि बहुत ही नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ इंडियन स्टेट्स भी हैं जिनको अंग्रेजी चाहिए, तो स्लाइड्स इंग्लिश में हैं और थोड़े हिंदी भाषी मित्र भी होंगे ऑनलाइन। Maharashtra figures amongst the top states with employable talent, as well as it is one of the top hiring state as per the Skill India Report 2020. अगर आप राष्ट्रीय औसत देखें स्किल्ड वर्कफोर्स की, फॉर्मली स्किल्ड जिन्होंने कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज किए हैं, तो महाराष्ट्र जो राष्ट्रीय औसत 5% है, महाराष्ट्र का 10 से 15% वर्कफोर्स आज फॉर्मली स्किल्ड है. वी हैव अ गुड इकोसिस्टम of 4 SEZs, lakhs of MSMEs and MIDC industrial estate that is well spread all across the state. We also emerged as a top performer category of startup ranking framework this year. And जो
अभी केंद्र शासन ने जो एक टारगेट रखा है 47 लाख युवाओं को ट्रेन करने का और डीबीटी अडॉप्ट करने का, महाराष्ट्र में आपके पोर्टल के हिसाब से 3 लाख प्लस एस्टैब्लिशमेंट्स अप्रेंटिसशिप की जा सकती हैं एक साल में। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बहुत ही उसके जो भी एडवांटेजेस हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग that the apprentices get opportunities for networking, for career counseling. When they work in the industry, it's a gateway to regular jobs. They get an opportunity for learning while earning while learning. And of course, the country gets increased youth participation to workforce. For the establishments, it's a way of cost-effective training. You get additional manpower, access to new talent and ideas. And besides that, better employee retention. I think that is very important. If I take you to initiatives taken by Maharashtra, we passed an amendment in 2017 to the 1961 Act. And we have increased the limit from 15% to 25%. जो केंद्र शासन में टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ से अप्रेंटिसशिप 2.5 से 25% तक लिए जा सकते थे, महाराष्ट्र में 25% तक लिए जा सकते हैं। तो this has vastly increased the scope for apprenticeship engagement. And we also have a parallel Maharashtra apprenticeship promotion scheme. तो जो भारत सरकार की आपकी नैप से 1500 रुपए तक स्टाइपेंड देने की, उसके टॉपअप स्कीम एक महाराष्ट्र में है, मैप स्कीम, जिसमें हम 5000 तक प्रतिपूर्ति करते हैं। और जो नैप्स के कैंडिडेट्स होते हैं उनको एडिशनल टॉपअप सपोर्ट ऑफ 3500 इज गिवन. And besides this, there is a financial assistance up to 12,500 given to the training providers for basic training. So as you can see that the state is trying to complement and be progressive in its policy framework. हमारी जो मैप स्कीम है वो ऑलरेडी डीबीटी अप्रोच पे थी, पहले से ही वो डीबीटी अप्रोच पे थी. एंड आई एम ग्लैड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ हैज टेकन दिस लीड टू कन्वर्ट टू डीबीटी अप्रोच, सो इट विल अलाइन वेरी वेल विद आवर स्टेट initiatives. And besides this, we are also doing coordinated efforts to organize job fairs with industry participation, as well as deepening industry tie with our ITIs. We do both online and offline interface regularly with industry. And we also have a portal which is mahaswam.gov.in. So it is a portal which allows you to have an aggregation, online aggregation of job seekers and employers. Also give registration facility for search vacancies, notifying vacancies, putting ad for vacancies. Employer login is there, and also it does some data analytics for us for better planning and evidence-based planning. We have almost 1 lakh registered employers on our Mahaswam portal, as you can see, and some of the top brands are there. But coming to that, ये जो जितना भी हमने एफर्ट किया है कि हमने मैप्स भी बनाई है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, हमने पोर्टल भी बनाया है सबको साथ में लाने के लिए, एकजुट होने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस हर तबके की तरफ से है. स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव इसमें समझने की जरूरत है. मुझे लगता है कि अप्रेंटिस की दृष्टि से उनको सब भौगोलिक जो दुर्गम एरियाज हैं उनमें उनको अप्रेंटिसशिप अवेलेबिलिटी नहीं होती. आज भी जो उद्योग है वो महानगरों के आसपास है. उसके अलावा उनको पूरा जो सपोर्ट मिलना चाहिए उनकी जॉब प्रोफाइल के साथ, ट्रेनिंग के साथ, कई जगह उनको वो नहीं मिल पाता. एक क्लियर फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें they are engaged in productive work and they have a career progression path. I think we need to work together as a team on that. Also, in some cases, I would not say all, there is a advantage that is taken to circumvent labor laws. And sometimes there is a, apprenticeship hiring in groups and terminating their apprenticeship. I think such kind of, some kind of regulations on such malpractices need to be looked at. Also, apprenticeships need to be given some more inputs, soft inputs to prepare for interviews for the industry establishments, and poor digital access and complex registration forms where intermediaries come in. I think that is also a challenge for students who are in rural and far-flung areas.
For establishments, I think some of the challenges for smaller establishment could be lack of dedicated infrastructure for training and equipment. Timely disbursement, I think ये बहुत बड़ा एक issue establishment के साथ रहता है. Sometimes some kind of harassment for compliance. This could also be a deterrent to the establishments. Lack of alignment between needed skills and availability, and of course the issue of sometimes commitment from the young apprentices who may not understand the value of that. From the government viewpoint, I think the challenges that remain are limited access, because government has to act on principles of equity. So not all geographies have industry establishment to give apprentices. Limited regulatory framework, though we have a national law, but its implementation is not uniform across the country. Limited monitoring and evaluation. हमने ईमानदारी से अभी apprentices का impact evaluation नहीं किया है, उसको करने की जरूरत है. Adequate and timely budgetary provisions and smooth fund flow mechanism. I think that is very important, right from center to state to our local establishments. This fund flow mechanism has to be very, very timely. It is the backbone of taking of this scheme to a next level. Low MSME participation, I think that should also be government concern. One of the panelists have pointed it out. Because 3/4 of the apprenticeship recruitment is still happening in the state with larger companies, and there's a huge scope for MSMEs participation and value creation. I think from government perspective, another challenge remains the social inclusion aspect of greater participation for women and persons with disabilities. I would put some suggestions, Sonal, for outreach and social inclusion. Of course, one is very well aware of the need of huge publicity and awareness building through targeted campaigns and outreach programs to industry establishment, colleges and BTPs and VTIs, which Government of India is already undertaking through several melas, workshops and others. But I think we need to be very, much more aggressive about them. Industry cluster model. I think industry clusters are emerging in a big way, which can be sites for apprenticeship. तो इंडस्ट्री क्लस्टर्स के लिए हमें इंसेंटिवाइज करना वो जरूरी होगा. एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स फॉर MSMEs, क्योंकि ये छोटी संस्थाएं होती हैं, पर इनकी भी अब प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, तो उनको टैप करना और उनको इंसेंटिव देना जरूरी होगा अप्रेंटिसशिप को बढ़ाने के लिए. नैप्स की ब्रांडिंग भी अगर हम कुछ naukri.com जैसी इस तरह की कर सकते हैं फॉर अप्रेंटिसशिप, I think a branding and repositioning of NAPS would be great. Enhancing of stipend. I think in some, at least for students who have to relocate themselves, I think, or some kind of facilities, I think those would be important. Increasing female participation, again, some kind of incentives or amenities like accommodation and extra leave and female safety. I think that those will be important considerations. और PWD पार्टिसिपेशन के लिए दिव्यांग लोगों के लिए रैम्प्स, एलिवेटर्स, एक्सेसिबल रेस्टरूम्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एंड वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs who can facilitate partnership with disability organizations to connect with industries, and some kind of incentives to employers, or at least their recognition in the social space, to those who consciously employ persons with disabilities. I think that will go a long way. तो मैंने संक्षिप्त में जो इस स्लाइड में बताया हिंदी में कि आपको इंडस्ट्री क्लस्टर्स के लिए, MSMEs के लिए कुछ इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन देने की जरूरत है, और महिलाओं के लिए और दिव्यांग के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है. Better tech interface, because we are sitting on a portal, and portal that is why, because it will be a technology driven disbursement system which will be transparent. My first suggestion and request to Government of India would be that many states like Maharashtra and I think recently UP, Gujarat have also announced monetary schemes, additional monetary component to NAPS. So I would request that if the portal could build in a feature enabling states to do their additional component, because the beneficiaries are the same, and it will avoid duplication of efforts in accounting. That is one. Secondly, also facilitate a feature to generate
contracts up to maximum level. Means if our state government has extended the apprenticeship limit to 25% of the establishment, we should be able to create that on the portal itself. Integration of CTS, the craftsman training scheme, which is through NCVT MIS portal, and apprentices, which is through your apprenticeship portal. I think that is very important because we are missing out that our ITI, I'm told that there are 15,000 ITIs across the country, creating, training nearly 15 lakhs youth every year. Now, I think when they clear their CTS exam, there should be auto registration on Apprenticeship India portal. इससे हमको लाखों युवा जो प्रॉपरली प्रशिक्षित हुए हैं ITIs में पूरे देश में, उनको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा और इंडस्ट्री को एक रेडी डेटाबेस मिलेगा कि उनको वो बच्चे किस क्षेत्र में कहाँ से पिक करने हैं. I think that kind of, because today that data is not in public domain. I think that is very, very important, I would say. Providing access to state directorate, जो हमारी BTRIs और directorates हैं, आज ऑप्शनल ट्रेड्स का उनको एक्सेस नहीं है डेटा का, उनको देना ये बहुत जरूरी है. और उनको भी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, जो औद्योगिक स्थापना होती है, जो ट्रेनी होता है, और जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या BTRIs और हमारी स्टेट एजेंसी है, उनको इस अग्रीमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए. क्योंकि कई बार अगर पोर्टल पे डायरेक्टली ऑटो रजिस्ट्रेशन और सैंक्शन होती है, तो कई जगह में ऐसा पाया गया है कि वो औद्योगिक संस्था में सबकी बात नहीं कर रही, वहां पे फॉल्स रिपोर्टिंग होती है और उनके पास एक्चुअली फिजिकली उतने एम्प्लॉयज भी नहीं होते और उनके पास ट्रेनिंग की सुविधा भी नहीं होती. तो इस तरह के थोड़ा सा एक मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स के लिए करना जरूरी है, ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट एजेंसीज, एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर स्टेट अप्रेंटिसशिप मशीनरी. आई थिंक इसके महत्व को समझने के लिए आप लोग काफी वर्कशॉप्स कर रहे हैं. 250 में से महाराष्ट्र में भी 10 वर्कशॉप्स का टारगेट था, 7 हुई हैं, बाकी हमने बहुत सारी हमारे स्तर पे ली है, लेकिन इस चीज को बढ़ाने की जरूरत है. आई वुड नॉट गो इनटू दिस बिकॉज आई विल सेंड यू सेपरेटली, बट there are a lot of suggestions for portal improvement, which you can look at data reconciliation and certain filters that can be introduced. You can have a multilingual user interface. You could also think of an apprenticeship training tracking mechanisms and a grievance redressal mechanism as you go on to BT. That will be important. I would just like to show some pictures on activities at job fair, which we do it not only for regular jobs, but connecting the apprenticeship, potential apprenticeship to industry people. You can see different regions, Aurangabad, Amravati division. This is one of the speakers talked about social inclusion. So we had Tata Electronic Counseling and Orientation in Kinwat region, Nanded region, which is a tribal region. So I'm just showing you some examples. We had 2,000 girls who were picked up by Tata Group in this Mela. We also target specifically women ITIs for placements and apprenticeship. So I would now like to take you through. तो हमने महिलाओं के लिए रोजगार मेला में और जो आदिवासी और दुर्गम रूरल एरिया से और पूरे राज्य में हमने इस तरह के इंडस्ट्री कनेक्ट के लिए हमने प्रयास किया है. आप देखेंगे अभी हमारी बात हो रही थी डिग्निटी देने की, कि अगर कोई फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ इन यशोगाथाओं से कि हमारे बच्चे कितना आगे इन ट्रेड्स को कम नहीं समझना चाहिए. क्रिस्टो की कहानी है, उन्होंने फिटर ट्रेड किया था डॉन बॉस्को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और आज वो एक्सप्रोनॉट सी लिमिटेड में वो फॉरेन कंपनी है और उसमें 3 लाख सुपरवाइजर के पद पे कमा रहे हैं. उससे पहले भी उन्होंने एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल में काम किया था. ये हमारे जैसे जो हमारे सक्सेसफुल एलमनाई होते हैं उनके बारे में भी हम बता सकते हैं. कैंडिडेट्स को मोटिवेट करने के लिए जैसे प्रोफेसर सुनील मोरे हैं, ये हमारे गवर्नमेंट ITI चांदवड़ के इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड के स्टूडेंट थे और आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उसके बाद उन्होंने पढ़ाई करके अपना और डिग्री कंप्लीट किया और उसके बाद वो प्रोफेसर बने. तो और उन्होंने सैमसोनाइट और गोंदिया वगैरह में सब जगह अप्रेंटिसशिप की है.
मधुकर सूर्यवंशी जो हैं उन्होंने ITI धुले में टर्नर का काम किया। अभी वो 1.5 लाख से ज्यादा उनकी तनख्वाह है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में उन्होंने स्कॉलर अप्रेंटिसशिप की और आज वो सीनियर मैनेजर HR रिलेशंस टाटा ग्रुप में है। तो अगर मैं ये सब स्टोरीज इसलिए बता रही हूँ कि कितना पोटेंशियल है हमारे इन वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, और किसी को भी, सब युवा जो यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे से, उनको ये समझना चाहिए कि ये कितना करियर प्रोग्रेशन है। वैसे ही ऑरवेल इलेक्ट्रिशियन है जो आज 1.25 लाख रॉयल कैरिबियन शिपिंग में कमा रहे हैं। We are running short of time. No, these are great examples. Yeah, I have come to, sir. I was given the time at 12:30. I was, yeah. So, Each part said about 2 minutes. yes, I'm Right. finishing, sir. एंड फिर आकाश भी आप देखिए नासिक में फिटर थे जो अभी उनकी खुद की 2 करोड़ की उनकी खुद का टर्नओवर है। तो ये हमारे कुछ बच्चे, ये लास्ट स्लाइड है मेरी, ये बच्चे मयूर, अभी इनको जगुआर लैंड रोवर स्विट्जरलैंड में लिया गया है ITI उस्मानाबाद के। हमारे 34 बच्चे इस साल जापान और जर्मनी के पैकेज पे जा रहे हैं। हमारे 60 ITI लातूर के बच्चे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में जा रहे हैं। तो मैं आपके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत जल्दी संक्षिप्त में अपनी इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स सो मच। थैंक्स श्रीमती मनीषा वर्मा जी। और महाराष्ट्र का जो ये एग्जाम्पल है उससे देश के बाकी सभी युवाओं को सीखने का बहुत बड़ा मौका मिला होगा। और अब मैं बहुत तुरंत ही आगे बढ़ती हूँ अपने अगले एस्टीम्ड पैनलिस्ट के पास, जो है श्री आशुतोष गुप्ता जी। श्री आशुतोष गुप्ता जी हैं कंट्री मैनेजर लिंक्डइन के। एंड श्री आशुतोष गुप्ता जी ने अपने साथ जो है वो कम से कम 2 दशकों का एक्सपीरियंस है इनके पास इंटरनेट एंड IT एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज का। एंड ही हैज earlier worked in big giants like Google, Cognizant and Infosys. He joined LinkedIn in 2013 to lead LinkedIn Marketing Solutions (LMS) in India, where he scaled the enterprise's businesses. In 2016, he moved to Singapore to build the LMS online sales organization for Asia Pacific and China. So most welcome, Shri Ashutosh Gupta ji. Let us have insight from you, please. Thank you, Sonal ji. Good afternoon, everybody. Respected chairman, esteemed panelists. It's a pleasure and it's a privilege and honor to be here today. LinkedIn एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉब सीकर्स आते हैं, जहाँ कंपनीज उनको जॉब सीकर्स को जॉब्स देने के लिए आते हैं। तो इट्स लाइक अ मार्केट प्लेस वेयर पीपल कम टुगेदर। वाई हम लोग यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड हैं कि स्किल्स हमारा फोकस है। हम एज अ प्लेटफॉर्म वी ऑलवेज फोकस ऑन स्किल्स। सो यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये हमारा डिस्कशन है। युवा लोग हमारे फ्यूचर हैं। And we have a strategic advantage over other countries globally, which is namely demographic dividend. We have the might and the power of the youth for us. So to take advantage of this dividend, Honorable Prime Minister has laid down the strategic vision in the budget and the thrust on skilling, reskilling and upskilling. हमने आज सुबह भी सुना, उन्होंने बोला the importance of skilling and reskilling, the importance of learning. So मैं सब लोग जो सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि स्किल्स इज़ द न्यू करेंसी। स्किल्स एक वो ऐसी करेंसी है जो आपको बहुत दूर तक लेके जाती है, एंड स्किल्स लास्ट फॉर एवर। सो स्किल्स इम्पॉर्टेंट हैं कि हम स्किल्स सीखते रहें, हम लर्निंग पे ध्यान रखें ताकि हमारे स्किल्स रिफ्रेश होते रहें। वर्ल्ड आउटसाइड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, you know, and I'll give you some data points which are quite interesting because of the technology disruptions, things are moving very fast and they're very dynamic. According to our LinkedIn data, skills for a job in India have changed by around 30% since 2015 and now are expected to change by 48% by 2025. So मैं फिर से बोलूँगा और हिंदी में बोलूँगा, जो आप आज जॉब करें, जो उसके लिए स्किल्स चाहिए, आधे स्किल्स वो चेंज हो जाएंगे बाय 2025। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग, क्योंकि जो आज हमें आता है, जो हम स्किल्स हमने सीखे हैं, माइट नॉट बी वेरी रेलिवेंट इन द फ्यूचर।
right? So hence learning is important. Continuous learning, making learning a focus always is very, very important, and to build new skills which might be required in the future. एक एस्टीम पैनलिस्ट ने और एक बात बोली जो मैं फिर से री एम्फेसाइज करना चाहता हूँ. हम जब भी स्किल्स के बारे में सोचते हैं हम ज़्यादातर हार्ड स्किल्स के बारे में सोचते हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. हमने ये देखा है हम क्योंकि हमारे पास ये जितनी जॉब्स आती हैं प्लेटफॉर्म पे हम उन्हें एनालाइज करते हैं, हमने देखा है कि काफ़ी सारे सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, वर्किंग इन अ टीम्स is very, very important, right? So not only hard skills but even learning soft skills is very, very important. So learning is the focus and India is embracing learning very, very strongly. हमारा LinkedIn डेटा दिखाता है कि जो LinkedIn इंडिया के मेंबर्स हैं इंडिया में, they spent over 4.6 million hours on LinkedIn learning in 2022. 4.6 million hours on LinkedIn learning. It was 2x the average of the global countries on LinkedIn. So Indian members are already embracing learning, which is very heartening to see, and we have a lot more to do. आज सुबह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात पे एम्फेसिस डाला और रीट्रेट किया कि वी नीड टू कंटिन्यूसली लर्न एंड स्किल to make ourselves future ready. Apprenticeships can be highly effective in promoting skill development by providing opportunities to learn and apply new skills, thereby increasing their potential to secure employment despite having no prior work experience. And this whole idea of apprenticeship and not having prior work experience very, very closely ties into the focus of LinkedIn globally and in India, which is skills first. So we are committed to build a skills first economy, जहाँ पे skills, having relevant employable skills, demonstration of this of those skills get you a job rather than the past work experience or the pedigree of your work experience. So I think, as I said, this very deeply ties into LinkedIn's vision of creating economic opportunity for every member of the global workforce. I'll keep it short because I think the deliberation and discussions will be far more important. But it's a great pleasure to be here. We are committed to working with Government of India and Skills Ministry to realize the vision of being skills capital of the world. Thank you for having me here. Thank you. Thank you for keeping it very short and very crisp, आशुतोष गुप्ता जी. एंड जो सुबह हम सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में सुना था कि स्किलिंग के साथ अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की बहुत जरूरत है, उसको आपने फिर से फोकस किया है. और स्किल फर्स्ट इकोनॉमी बनाने के लिए जो आपने एक ध्येय या निर्देश दिया है, वो भी हमारे लिए एक बड़ा अच्छा सजेशन है. सो थैंक यू अगेन, थैंक यू. नाउ मैं अब फिर से इनवाइट करूंगी डॉक्टर विकास चंद्रा जी को और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना उद्बोधन अगले 2 से 3 मिनट में अगर सिर्फ आप जो कर रहे हैं वो बता के पूरा कर दें तो हम प्रश्न लेने में सक्षम रहेंगे. जरूर जी. Thank you. So I hope now I am audible well. Yes, you are quite audible and video also is fine. Please. Thank you. To continue with my discussion, that as a ArcelorMittal Nippon Steel, first we are strengthening the local ITIs and strengthening there in terms of the course curriculum development. Also, we have started dual system trainings which are relevant to the industry to get the skill force. We have set up a center for excellence. And this is one. Other part was the upskilling part. So we have also set up a skill academy in our as one of the HR initiatives where we regularly do the upskilling of the existing manpower. Going beyond at a futuristic step, as you know, the Prime Minister of India has a vision to have a 300 MT steel production in next 9 to 10 years. So the quantum of the skilled manpower is required is huge, and to align with this mission and taking this as a priority initiatives, we have planned to set up a skill university in Gujarat, and we are working on that. So we have set up a transitory campus at IIT Gandhinagar. So this will be a skill university 4.0. And being a global presence, we will be collaborating with global
potential partners. So, and focusing on the futuristic vocations like smart manufacturing, smart automotive system, smart material manufacturing. So we have onboarded ITE Singapore. We have also collaborated with Colorado School of Mines, universities of US. So these are some of the global partnerships that we have formed. So what, as a global player, we as an industry, we can help in bringing the eminent global institute where the student can benefit from exchange programs and the curriculum co-development in new areas. And so this is our future initiatives. So we and to have also the social inclusion, we are through CSI initiatives, we have partnered with National Skill Development Corporation, where we are providing training on digital trade, and till now we have provided 800 local youths on different vocations, which has achieved a 70% placement campus, and we aim to in another couple of years reach out to 5,000 youths. So these are some of the initiatives that we as ArcelorMittal Nippon Steel are taking, and as the industry has a very major role, and we are the, as an industry, it needs to collaborate and to take the partner with the government, and ArcelorMittal Nippon is will be very will be prompt in partnering with the mission with the government in whatever ways, and we will take this journey together. So I will keep my deliberation short. So thank you for inviting us for this in this team panelist and for this webinar. Thank you. थैंक यू डॉक्टर विकास चंद्रा जी। और आपने जिस तरह के कोलैबोरेशन बताए हैं आर्सलर मित्तल निपन स्टील की तरफ से, खासतौर पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्किल एकेडमी पार्टनरिंग विद IIT गांधीनगर एंड डेवलपिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आई थिंक honorable chairman sir has also kind of noted this, and this will be a good message to go for many such giants like you to partner with the centers of academic importance. So sir, now just for knowledge of the honorable chairperson and the panelists, we are now closing the panel discussion. We have completed and we have got very great insights from all the panelists. And sir, if it is fine, do we open the questions now, because I am getting lot of messages and lot of chat boxes that अब हमारे को भी कुछ सवाल पूछने हैं और जानना है डिटेल में पैनलिस्ट के बारे में। So yes, I think the entire panel is eager to listen to the questions and answer them. जी सर। सर सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में से मिले हैं सर, इनके कई बार आ चुके हैं, श्री दीपक जी, वाइस प्रेसिडेंट शाही एक्सपोर्ट, ये इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं सर, और ये हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। जरा दीपक जी को प्लीज आप दीपक जी को ज्वाइन करिए। नहीं है अभी? अच्छा, श्री अच्युतानंद जी हैं वेदांता से, कालाहांडी उड़ीसा। उनके भी चैट बॉक्सेस में आए थे। दीपक जी, उन्होंने बोला है प्लीज अनम्यूट है, उनको अनम्यूट करिए दीपक जी को। आप कुर्सी लेके उनके बगल में ही बैठ जाएं प्लीज, सो दैट वो रियल टाइम में चेक होता रहे कौन कौन है। आप दीपक जी को अनम्यूट करें। दीपक जी। हेलो। हाँ यस दीपक जी, शाही एक्सपोर्ट्स में से दीपक जी आप जुड़ चुके हैं। यस। प्लीज सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। रिक्वेस्ट है अपने सवाल शॉर्ट में पूछिए जिससे कि पैनलिस्ट। Yes, 100%. It has been a great experience listening to all the respected panelists. My question is to Shri Rajesh Agarwal ji. Sir, I got a great insights about the DBT system, what you had actually conceptualized and implemented, and I think it's a great move. And we all believe that DBT is considered as the game changer in the apprentice ecosystem. So maybe if you can just help us to understand it at a bit deeper level, it will be great. Thanks, Deepak ji.
First of all, I think DBT is one of the most important pillar of the transparency and corruption-free governance agenda of the government. This has been something on the forefront for last 7-8 years through the JAM Trinity, where DBT has been rolled out in multiple facets, and whichever schemes has seen DBT, it has always led to better confidence building, more effective implementation of the programs, and more confidence in the people who are the real beneficiaries of the program. By bringing in DBT in the apprenticeship ecosystem also, I think we are moving in that direction, wherein there will be a lot of confidence building in terms of getting their stipends in time. Industries will also be using the DBT ecosystem for moving their stipends. It will also lead to some amount of financial and digital inclusion of this trainees also, because when you use portals, when you interact on the digital platform, when you use the DBT as a mechanism, there's some amount of information, some amount of education also willy-nilly takes place of the people. And three, I think this is also in sync with the overall agenda of the government, where it's aligning the entire interface of the government to the apprenticeship ecosystem, whether it's to the trainee or to the industry through a digital framework. I think DBT is the next was definitely the next logical step. I think I understand the ministry has already done a good pilot around DBT for last 6-8 months, wherein more than 1.5 lakh apprentices have benefited out of it. More than 23 crore rupees have already been transferred, which is already a testimony to the fact that this portal and this whole mechanism is working fine. I think this entire effort now, the entire program which will be implemented under DBT, will give a lot of confidence both to the trainee industry and the government that the program is on the path, and whatever the apprenticeship is offering in terms of stipend is completely true and on time. So I think it's a great move in the right direction. सर थैंक यू सर। ये इस सवाल के सामने आपने जो विस्तृत रूप से जवाब दिया है सर, उससे मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी भी आएगी। और हाँ सर, हमने जुलाई 2022 से डीबीटी के लिए पोर्टल को लाइव करके उसकी टेस्टिंग भी की है, और जो आपने आंकड़े बताए हैं उसकी के हिसाब से इसमें हमें संतोषकारक नतीजे भी प्राप्त हुए हैं। अब सर हमें दूसरे हमें मिल रहे हैं जो सवाल कर रहे हैं, श्री अच्युतानंद जी फ्रॉम कालाहांडी, उड़ीसा। हेलो अच्युतानंद जी, आप हमसे जुड़े हैं जी, आइए। Respected chairman and esteemed panelists, my question is, how can apprenticeship be made aspirational for youth? ये एक जनरल सा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब इंडस्ट्रीज भी दे सकती है, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स। चेयरमैन सर, हाउ कैन एकेडमिया कंट्रीब्यूट फॉर दिस? तो सर आई वुड रिक्वेस्ट चेयरमैन सर अगर इसका एक जवाब दिया जाए जी। No, this is an important question. How can we make it aspirational? Often we think that after apprenticeship, we end up in a job, and after that there is no future. But using the national education policy as a roadmap now, we are providing a lot of flexibility and choices and opportunities to the students. Even we are going to consider the prior learning experience, and using the academic bank of credits, students can accumulate these credits in the ABC, and once these credits correspond to certain level, students can enter laterally in any educational program. We have seen from the example of Manisha ji, who spoke earlier, where some of the apprentices have become assistant professors, and they have gone to the higher positions. So these opportunities are part of our national education policy, and apprenticeship will become an aspirational profession for many of the youth. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स ये बहुत ही विस्तृत से बताने के लिए सर। और अब हमें सर चैट बॉक्स में से हमें सर सतीश पवार जी हैं, चेयरमैन युवा शक्ति फाउंडेशन। सतीश पवार जी, आप हमसे जुड़ पाए हैं क्या? सतीश पवार जी, इनकी तरफ से भी हमें एक रिक्वेस्ट आई थी। सतीश पवार जी, चेयरमैन युवा शक्ति फाउंडेशन, इजी कैन ही
Can we connect with him? Yeah, सतीश जी, आपके पीछे कुछ बैकग्राउंड नॉइज है, या तो उसको बंद कर दीजिए प्लीज. yes, I'm audible. हाँ, यस यू आर ऑडिबल, लेकिन आपके पीछे भी कुछ बैकग्राउंड नॉइजेस, और भी तो कोई अनम्यूटेड नहीं है? नहीं. आपके पीछे कुछ मैडम, बैकग्राउंड नॉइजेस है सतीश जी को अभी. नो मैडम, नो मैडम. यू म्यूट हिम. सतीश का Hello. पीछे बैकग्राउंड. हाँ यस, अब ठीक है सतीश जी, बताइए. Basically, madam, MSME is largest employment generation sector after agriculture, and as we are aware that apart from service sector, MSME has their own set of challenges related to operation and all. So my question is, apart from DBT, what flexibility has been provided to establishment, especially service sector and MSME industries, to encourage the apprenticeship training? सर, ये फिर इस जवाब के लिए शायद मैं राजेश अग्रवाल जी सर आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा इंसाइट आप दें, एंड अदरवाइज आल्सो इट इज ओपन. ये इसमें जो इंडस्ट्री कर रही है वो भी थोड़ा इनपुट दे सकते हैं, इनपुट स्टेट से भी आ सकते हैं. सर, I think apprenticeship training in India traditionally was largely in manufacturing sector, but to open it up for services sector, I think the concept जो optional trade का इन्हीं के लिए आया था. ऑप्शनल ट्रेड, क्योंकि हमारे पहले जितने भी ट्रेड्स कोर्सेज थे, अराउंड 200 और डिजिग्नेटेड ट्रेड्स जिसको हम लोग कहते थे, जो के ITI से जुड़े थे, वो सारे कोर्सेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े थे, क्योंकि पहले समझा जाता था शायद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री सेक्टर ओनली. पर इंडिया में जिस तरह से सर्विसेज की ग्रोथ हुई है और जिस तरह से सर्विसेज की ग्रोथ अक्रॉस द वर्ल्ड हुई, और सर्विस सेक्टर अब ग्रेजुअली मेजर इकोनॉमीज का एक मेजर पार्ट बन रहा है, तो इसमें यह पाया गया कि सर्विसेज सेक्टर में, वेदर वो रिटेल हो, हॉस्पिटैलिटी हो, टूरिज्म हो, ब्यूटी एंड वेलनेस हो, सभी जगह स्किल ट्रेनिंग की आवश्यकता है. और इसमें काफी बड़ी कंट्रीज ने भी इसको शुरुआत किया था. यूके वगैरह में आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में काफी अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा दिया गया. उसी को अडॉप्ट करने के लिए 2014 में ऑप्शनल ट्रेड की व्यवस्था की गई, ताकि ऑप्शनल ट्रेड के माध्यम से इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री नए कोर्सेज बना पाए, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर इंडस्ट्री के लिए, उसके आधार पे कोर्सेज का गठन कर पाए. सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस किया गया, जैसे आशुतोष जी ने बताया, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में खासकर इफ यू हैव टू ग्रो, इफ यू हैव टू राइज, इट इज द लाइफ स्किल्स एंड द सॉफ्ट स्किल्स विच आर इंपॉर्टेंट. इसको भी इनके साथ जोड़ा गया एक बेसिक ट्रेनिंग के तौर पे, ताकि आप कोई भी ऑप्शनल ट्रेड देखेंगे जो कि सर्विस सेक्टर से जुड़ा है, तो उसमें सॉफ्ट स्किल्स के कंपोनेंट्स भी जरूर होंगे. तो इसको काफी रिलैक्स किया गया. और इसके साथ साथ एक सेक्टर स्किल काउंसिल, जो कि हर सेक्टर से एक इंडस्ट्री काउंसिल थी, उसको अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम से जोड़ा गया, ताकि सेक्टर स्किल काउंसिल इंडस्ट्री के साथ काम करके ऑप्शनल ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ सके, सर्विस सेक्टर में भी अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा दे सके. और ये शुरुआत जो कि 2016-17 में हुई थी, मुझे लगता है अब काफी आगे बढ़ चुकी है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज भी बन चुके हैं और बहुत सारे बच्चे, मुझे जहां तक ज्ञात है, इस साल 4 लाख से ज्यादा लोग ऑप्शनल ट्रेड के अंदर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इस वर्ष में, वित्तीय वर्ष में ले रहे हैं. एक अच्छा नंबर है और ये एक अच्छी प्रगति दिखाई दे रही है. सर, ऑप्शनल ट्रेड में करीब 60% जो अप्रेंटिसेस एंगेज हो रहे हैं, उसमें से 60% का नंबर, क्लोज टू 60% दे आर गेटिंग एब्जॉर्ब फॉर द OT ऑप्शनल ट्रेड. और सबसे बड़ा फायदा ये है सर कि ऑप्शनल ट्रेड के जो कोर्स कैरिकुलम या कोर्स या जो जॉब रोल्स होते हैं, वो इंडस्ट्री स्वयं ही बनाता है. तो ये एक जो होता है कि दैट द फ्लेक्सिबिलिटी विच गोज टू द इंडस्ट्री, दैट इज अ ग्रेट हेल्प, कि वो खुद ही बनाता है, खुद ही उसको असेस करके सर्टिफाई करना होता है. तो एक कहा जाए कि एक ही जगह पे उसका सारा काम अपने स्वयं से हो जा रहा है, तो इससे बड़ा फैसिलिटेशन तो और क्या विचारा जा सकता है. सो थैंक यू सर. अब हम सर खास तौर पे यहाँ सर्विसेज सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर की इतनी बातें हुई, तो एक सर, और जैसे बताया गया, NSDC के पास करीब 37 जितनी सेक्टर स्किल काउंसिल है, तो उन्हीं के एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबरान है सर श्री सौम्या रंजन जी. He is the CEO of Banking and Financial Services and Insurance BFSI sector के for the Sector Skill Council. तो सौम्या रंजन जी, आप क्या जुड़ चुके हैं? थैंक यू सोनल मैडम. मैं सौम्या बोल रहा हूँ. आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है, एकदम क्लियर आवाज आ रही है सौम्या जी. Thank you to you, and this was a great to listen to all the panelists
with respect to apprentice. So my question to all of you is that what are the steps that has been taken by the government now to increase the uptake of apprenticeship training from by the industry or the establishments? इसका जवाब स्टेट से भी आ सकता है। मैम, आपने तो अपने बहुत इलैबोरेट प्रेजेंटेशन में बताया। इसके अलावा जो इंडस्ट्री खुद इसमें जुड़ी हुई है, मे बी राहुल भारती जी, आप अगर अपने जो आपने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसमें आप स्वयं से अगर कोई स्टाइपेंड देते हैं या आप जो करते हैं, आप उन चीजों को भी थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। Sure. So we have a good amount of stipend for our industries. And we have about 4,500 apprenticeship trainings every year. हर बार करते हैं। उनका प्रिसाइज क्वेश्चन मेरे से मिस हुआ है, एक बार अगर दोबारा उनका प्रिसाइज क्वेश्चन तो यही है कि हमने क्या स्टेप्स लिए हैं, what steps have been taken by government to increase the uptake of apprentices whether in industry or establishment. लेकिन सरकार के काफी स्टेप्स ऑलरेडी राजेश अग्रवाल सर बता चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि इंडस्ट्री की तरफ से भी एक इनपुट आए कि आप लोग जो कहा गया ना कि ये आपका कमिटमेंट है, ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ के इसमें हमें सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो आपकी तरफ से क्या इनपुट मिलेंगे इसमें? Sure. See, हमारा ना एक नेचुरल पुल है टुवर्ड्स अप्रेंटिस। उसका रीजन ये है कि अगर हम किसी यूथ के करियर में शुरू के 2 साल में टाइम इन्वेस्ट कर दें, तो उसकी लाइफ टाइम पूरा जो अगले 10-20 साल का स्पैन है, 30 साल का स्पैन है, उसमें हमें एक हाई क्वालिटी वर्कफोर्स तैयार मिलता है। तो हमारा एक नेचुरल इंसेंटिव है to invest in the training of such a person early enough in his career. तो हम तो हमेशा लाइक करेंगे, और हम हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री की बड़ी लंबी वैल्यू चेन है, हमारे सप्लायर्स हैं टियर 1, टियर 2, टियर 3, हम उनको भी एनकरेज करते हैं कि आप और अप्रेंटिस लीजिए, उनको ट्रेन करिए। सॉफ्ट स्किल्स में पर्टिकुलरली डिसिप्लिन और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में बहुत ज़्यादा गैप रहता है between what they learn at school and what is required in industry. तो वो गैप हम लोग डेफिनेटली ट्रेनिंग में ऐड करते हैं, एंड हमारा स्टाइपेंड काफ़ी हेल्दी लेवल पर होता है, तो between 15,000 to 17,500 rupees per month for people who work in our institutes, whether in our plants, whether in Haryana or in Gujarat. Plus, we provide them uniform. We provide them, of course, the regular lunch or dinner facility, whatever is required. And medical terms में भी उनका ध्यान रखते हैं। मुझे इंश्योरेंस का ध्यान रखते हैं उनकी, so that God forbid something wrong happens, they are covered. तो मुझे ऐसा लगता है कि MSMEs में थोड़ा सा और इस चीज का अगर प्रोलिफरेशन हो तो और एडवांटेज रहेगा, और हमें एक चीज से डेफिनेटली फायदा होगा अगर हम दूसरे स्टेट से, वी वांट अ वेरी डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स। तो जैसे हमारे ITIs 18 स्टेट्स में हम लोग इंटरवीन कर रहे हैं, तो साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, एक बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि अगर हम सिर्फ द लेफ्ट साइड ऑफ इंडिया एंड द राइट साइड ऑफ इंडिया वी कनेक्ट द डॉट्स, then it will benefit a lot, both for industry and for people. So that data, the national database will also help a lot, जिसमें cross flow of manpower and of industrial opportunities happen. थैंक यू राहुल भारती जी, बहुत अच्छा इनपुट आपने दिया, और मुझे लगता है जो इनिशिएटिव एफर्ट्स आप लोगों की तरफ से हो रहे हैं, वो बाकी सभी मेजर इंडस्ट्री जायंट्स को भी एक मैसेज इसकी तरफ से जाएगा, और वो कर भी रहे हैं, और भी ज्यादा आगे बढ़ के जो आज की 23-24 का जो बजट अनाउंसमेंट है कि 47 लाख युवाओं को जो अप्रेंटिस से जोड़ने की जो बात कही है, उसमें इंडस्ट्रीज का सपोर्ट पैरामाउंट है। तो थैंक यू सर। और फिर अगला एक सवाल आ रहा है गोपाल कृष्ण जोशी जी की तरफ से, बॉश बैंगलोर से। गोपाल कृष्ण जोशी जी, आप क्या जुड़े हैं हमसे?
गोपाल कृष्ण जोशी जी, आप जुड़े हैं क्या? Yes, yes. Am I audible? Yes, you are perfectly audible. आप अपना can we have question please? Yeah, yeah. To the panelists, good afternoon to you all. Let me quickly frame my question. You know that a lot of changes are happening in the business landscape. Man effort is taken over by machine. Digitalization is happening in the country. Under the circumstances, what do you think which we should together, and I say together, industry and apprenticeship board, to make differently in the apprenticeship training in India, which will help Indian youth become competent and employable in the industry. When I say industry, the changes which are happening in the industrial landscape. This is what question, maybe little lengthy, but in precise, under the current changing dynamics, what apprenticeship and industry together should play a role to make people become competent and employable. This is a very nice question with a lot of broad perspective. I would first request Chairman sir, because we have to start from the school itself. So sir, inputs from your side, sir, please. You know, he is absolutely right that things are changing at a much rapid rate today than it was, let's say, 50 years ago. 50 years ago, we could not have predicted what kind of jobs are going to come in next 5 years, 10 years. We could have easily predicted, but today it is not possible because the technological landscape and other processes, they are changing very rapidly. And that's the reason why even the national education policy says that we should not train our students in single disciplines. They should have multidisciplinary knowledge. So the same thing should happen even in the skill education. You should focus on certain skills, but you should also have an open mind and keep learning newer things so that you remain relevant to your present job and also the future opportunities that will arise. So that's the only solution. And in national education policy, we are doing many things to introduce this kind of the blurring of the disciplinary knowledge so that the students are broadly knowledgeable and they are able to take up any new skills that they are required to acquire. Excellent, sir. Your word that you are blurring the differences so that they are broadly knowledgeable, but then they are equipped to take up the new skills. I think that's a perfect way of response to the question. Vikasji, you were also wanting to contribute, maybe very quickly from your side. Yeah, as a industry, as a global player, as an industry, we can foster it in terms of industry aligned curriculums, industry relevant equipments in the labs, and dual system of training. So and joint certification, that global partnership and collaborations that can be formed, that industry can provide and push to make industry relevant curriculums, labs, training, imparting that, and push in terms of taking this drive, the ongoing benefits and scheme the youth have under the scheme of DBT and all. As an industry, we it's a part of our responsibility. So we can go away with the stipend and the benefits that push, but as a responsible companies, as an industry, we should because it's a win-win situation for a company as well. So we should as an industry, we can foster in bringing collaboration, dual certification. So these are some of the efforts that industry can contribute with under this scheme. Thank you, Dr. Vikas, for again reiterating the fact that industry has to be a major player. Yes, ma'am, I can see your hand being raised. Yes, ma'am. So thanks. I would like to mention, because Mr. Bharti is also here, that Maruti is working in 8 ITIs with us, and they in creating dedicated workshops they have created in Maharashtra, and lot of our apprentices are going to their factory in Gujarat. So, and just now someone from Bosch also intervened. They are also helping with 32 ITIs to make additional workshops with us. We are collaborating with them.
But I would like to just emphasize here, since the industry leaders are here, that we are just not looking for, when we talk about industry engagement, it is just not about creating centers of excellence through CSR funding. What we are looking at, good, intense PPP models. And right now my team is meeting many of the business leaders to create better PPP frameworks for industry, ties, and both in terms of upgradation of the infrastructure, but actually partnering in designing the course curriculum as well as management of these. So, and also getting access to the training centers that the industries have for their own employees. So this give and take is very important. This is what I would say, and not just talk in CSR framework alone for industry partnerships. Very, very valid input, ma'am, because industries do have their own training centers, which is well equipped, and especially this is absolutely in sync with their requirement. So that should become a point of training as well. So now I'm taking the next question. We can see in the chat box, Shri Dharma Rakshit ji, head human resources coming from Hero Motor Corp Limited. Dharma Rakshit ji. Hi, good afternoon. Am I audible to everyone? Yes, you are totally audible. So I represent the Hero Motor Corp. We are the world #1 in the manufacture and selling of the motorbike from the last 20 years. Sir, you have mentioned that very clearly that Government of India plans to have deploy the 47 lakh apprentices in the next 3 years. And you already mentioned that a lot of the programs are also being rolled out. Just to inform this thing, we do not charge anything from the government or state government or the Government of India as a remittance what you provide, because we understand that this is our responsibility. Moreover, we provide a lot of the benefits to our apprentices, and our stipend is somewhere between the 15,000 to 20,000. My question is very simple. How you are going to, what are the concrete plans to deploy the 47 lakh apprentices in the next 3 years? What are the expectations out of the industry? What are the expectations out of the youth who are willing to participate in this vision? I think Dharma Rakshit ji, your question is will kind of whatever we have deliberated, the some substance outcome is what your question is, that what is our clear-cut action plan to take forward the budget announcement. So maybe respected chairman sir, if possibly you can suggest the road ahead, so that would be kind of for everybody to understand. Yes. I think he has brought our attention back to the theme of our entire panel discussion. So how to raise the participation of apprentices from the present levels to 47 lakhs with the DBT support. So one of the things that we need to do is to increase the industry participation. There has to be more consultations with the industry to rope in them. And also we need to create more awareness through webinars, seminars, and even kind of fairs that can be arranged, so that among the youth also there is more awareness. And of course, we also need to see that there is a geographical uniformity in terms of the distribution of these apprentices, because often it may happen that in certain locations there is more industrial development, and many apprentices may emerge from those areas, depriving the other geographical locations. So we need to work out on how we can bring some kind of parity among the geographical locations across the country. So this is my brief answer to that. Okay, thanks, sir. Now we move on to the next question, which is coming. Okay, it is coming from one of our field level functionary from Shri Shram Sundar, who is junior apprenticeship advisor coming from Hyderabad. Shri Sham Sundar ji, are you there? Yes, ma'am. Please, you can spell out your question. Yes, ma'am. Yes, your question, please. माननीय महोदय लोग, मेरा नाम श्याम सुंदर है, प्रणाम। मेरा क्वेश्चन भविष्य के बारे में है। उसके लिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ
the role of apprenticeship training in creating a future ready workforce. इसके बारे में मुझे चाहिए, वर्कफोर्स फ्यूचर में कैसा बना सकते हैं, इसके लिए अप्रेंटिसशिप किस तरह उपयोग होगा, आप थोड़ा बताइए सर। ये आप सब लोगों के लिए माल विनती है। ठीक है। Thank you. Okay. Let me answer very briefly to what he has asked. See, if there is a mass level apprenticeship, skill enhancement among the youth, that will enhance the aggregate productivity level. And when that happens, we are adding value to our economy. And that will increase the per capita income of individuals. And that will then enhance the per capita wealth of the society. And that will help us to put in more efforts, more funding into skilling larger number of youth. So you can see that one feeds the other and ultimately makes our country a highly inclusively developed country. And that's the role of apprenticeship. Yes, yes, sir, absolutely bang on. And thanks for responding on that question. और आपको आपका जवाब मिल गया होगा श्याम सुंदर जी, और इसके बाद भी हमारे जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चलेंगे उसमें हम आपके साथ फिर से चर्चा विचारणा करेंगे। सर, अगर अनुमति हो तो हम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द स्टेट। उसके बाद सर लास्ट में फिर आपके पास ऑनरेबल चेयरमैन सर हम आएंगे, सो दैट क्विकली हमें रोड अहेड का थोड़ा सा मापदंड मिल जाए। कैन वी हैव द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैनल डिस्कशन फ्रॉम श्री संदीप पटनायक, Director HR from HAL. Yeah. Good afternoon. I am Sandeep Patnaik. Let me tell you, HAL is one of the oldest and largest aerospace and defense manufacturer in the world. HAL recognizes that apprenticeship training is one of the sources to develop skilled manpower for industrial growth by using the production facilities available in the company to impart the skill. HAL engages more than 3,500 of the total workforce as apprentices. And over the years, HAL has been recognized by Honorable Prime Minister for engaging the maximum number of apprentices. And HAL has also been awarded by the Ministry of Skill Development for an Kaushal Acharya Award, and Certificate of Appreciation has also been awarded to HAL. And HAL has also been participated in the pilot project for the NAFS 2. In this context, my question is, what are some of the reforms brought under NAFS 2 to attract youth? Introducing eKYC and PAN GST integration is a welcome step before rolling out DBT. However, what are the steps implemented by the government to make the entire DBT process seamless with little to no disruption? Thank you. Patnaik ji, I think quite a bit was already answered by Rajesh Agarwal ji when he was elaborating. But sir, क्योंकि ये सवाल उठा है तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा आप फिर से जरा eKYC, DBT, पैन टैन की जो समस्या, जो भी बातें हैं वो बता पाएं। जी सर। Thank you, Sonal. And Sandeep ji, as many of the panelists and during the panel discussion, we have seen this entire interface with the for apprenticeship is now an online thing, and it is generally a developing process. With every iteration, the things keep on improving faster. eKYC, GST, PAN, everything integration is a step in that direction where an individual or an establishment will need not have to go back to portal and again for same kind of details. Two, I think, as I already mentioned, there has been a pilot run for more than 6 months where this whole DPD process has already been successfully implemented. And whatever learnings has come out of those 6 months, whatever glitches, whatever loopholes, whatever gaps was found out, they have already been circumvented. They have already been covered in the revised version, which will be rolled out along with this new NAFS program for 47 lakh apprentices over next 3 years. So that will also enable make this whole DBT process seamless. Three, I think to make this entire process work well, the key important areas is how we onboard the MSMEs
and how we get on the trainees. I think there is a complete elaborate program of the ministry to have PM Melas, National Apprenticeship Melas across the country. Number of it have been lined up across the country to engage with establishments and also the youth, make them aware about this apprenticeship program, the stipend support under NAPS, and also see how they can seamlessly get integrated on this portal. Similarly, there are advocacy workshops also which are being planned around MSME clusters and industries so that they are more and more made aware and they are onboarded. Because if more and more industry gets onboarded, more and more trainees are made aware, and they are also brought in over the apprenticeship portal. Both, I think, the seamless movement of apprenticeship, delivery of apprenticeship training and management will be easy, and our target achievement movement towards the overall target of 47 lakhs also will be easy. Thank you. Thank you, sir. And here we close the question hour session. And though I would feel that some of the panelists possibly the questions were not directed to them, but maybe many questions were related to government or how do we achieve this target of the budget announcement and all. But I think we have had a very insightful and a very enriching contribution from each of the esteemed panelists. And now I will again go back to Honorable Chairman, sir, that if we can have some final inputs, and because we again have to draft a report and submit after a couple of hours. So maybe if we have a way ahead, sir, we can do accordingly. Honorable Professor M. Jagdish Kumar, sir. Right. Sonalji, while I thank all the panelists for their very insightful inputs, on behalf of the entire panel, I also want to thank you for wonderfully conducting this program. Thank you so much, sir. Okay. Right. One thing that came to my mind is while DBT is being tested in a pilot mode, we also had to see that before the stipend is given to the student through DBT process, there could be some bureaucratic processes, paperwork, which needs to be done by the student. I'll give you one example. In our university system, we use DBT system for scholarship dispersal. But then we found that at the university level, at the student level, they have to get a paper signed by the supervisor, then it will go to the dean, then to the registrar, then it will come to the UGC, and that was causing a lot of delays. So then we changed our portal and made everything, all paperwork related to the scholarship dispersal should be done only on the portal. So this is something that you may have to look into. And also, it may be worthwhile to call maybe 100 apprentices from across the country on an online portal and ask them about the experience of how this DBT is helping them in getting their stipends. So this is one suggestion that I wanted to give you. But of course, there are a couple of things that are main focus of our discussion. One is that how to increase the participation of both the state governments and also the industries in the NAPS too. That is one aspect on which all of us had to do the brainstorming and come up with some strategy on that. And then from the youth perspective, how to make apprenticeship more attractive. There was a question from the audience also that today, all said and done, it is still seen as a kind of secondary option to the students. So how to change that perception? So therefore, this can be done. One way of doing this is involving some of the top institutions themselves in skill education, in apprenticeship kind of work. If IITs and other top universities can be associated with that, perhaps the perception can be changed, and maybe some of you may have some more insights on that. And then we also have to, I think, periodically do studies by a third party to see how this apprenticeship scheme is actually enhancing the opportunities for the youth. And the fourth one I would like to say is that yesterday I had a discussion with Sonalji as a precursor to this. The participation of women in the apprenticeship is a cause for concern, although the numbers are increasing. I think we have a long way to go. One could be the social aspects. The other one is the nature of the apprenticeship itself. It is more considered to be hard apprenticeship. Therefore, we need to expand the apprenticeship opportunities
into different areas so that there is a larger participation from the women. And lastly, I think we need to have very focused effort on addressing the concerns of the students who come from the socially and economically deprived groups. So these are my initial thoughts. Thank you so much, sir. We have noted all the points. Just very briefly would say that periodic third-party review we had already initiated for the first version of the scheme, and women participation, as you have rightly, sir, yesterday also we had the discussion. It is definitely increasing, and because of precisely the optional trade and the flexibility provided to the industry. But yes, lot has to be done, and especially in the MSME sector, especially as the Honorable Prime Minister had said in this speech in the morning, कि जो last mile है, जो खास तौर पे हमारे traditional arts, weavers, especially sectors like tourism, civil aviation, green energy, इन sectors पे सर ने जैसे gift में बताया, services sector, financial sector, ये बड़े upcoming sector है और इस पे हमारा focus रहेगा. So सर, अब अगर आपकी अनुमति हो तो हम सभी के लिए हम धन्यवाद सादर करते हैं. और सर, ऑनरेबल चेयरमैन सर, यू हैव बीन अ सोर्स ऑफ इमेंस इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, एंड बहुत कुछ सीखना है आपसे सर. और कैसे हम इसमें और भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एकेडमिक्स को हम जोड़ें, जैसा सुबह भी हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि शिक्षा और कौशल इसको साथ में चलना होगा, तभी हमें जॉब रेडी युवाओं की टीम हमारी तैयार होगी. तो आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा ऑनरेबल चेयरमैन सर, ऐसा हमें पूरा इसका विश्वास है. एंड ऑल द एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स, it was a great having you. Thank you Rajesh Agarwal sir ji, thank you Rahul Bharti ji, thank you Injeti Srinivas sir, thank you Manisha Verma madam, thank you Dr. Vikas Chandra ji, and thank you Shri Ashutosh Gupta ji. आप लोग ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए फिर से आपका धन्यवाद. और साथ में हमारे जो पार्टिसिपेंट्स ने हमसे सवाल पूछा, उनके लिए भी बहुत धन्यवाद. और जो टाइम की कमी की वजह से सवाल न पूछ पाए, उन्होंने हमें चैट बॉक्स में लिखा भी है, हम उनके जवाब उनसे अलग से भी वेबिनार करके उनके जवाब जरूर देंगे. और पूरे देश में जो युवा हमसे जुड़े हुए थे, जो हमारे ITI के, स्कूल के और इवन कुछ जन शिक्षण संस्थान के भी कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हुए थे, उनका भी मैं बहुत सादर धन्यवाद करके इस पैनल डिस्कशन को अब बंद करती हूँ. थैंक यू सो मच. नमस्कार. One word of thanks and compliments for the excellent moderation across multiple stakeholders. I think all panelists would. All of us join you in congratulating and thanking so much. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks, sir. Thanks.